Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So promised earlier that it's going to be a double header at Parraypora Sports Field, the second final of the day, and we are live and exclusive from the sports field of Parraypora, Rafiabad. Youngstar Reban are taking on NCC Nowpora. NCC Nowpora have won the toss. They have opted to bat first, and we're all set to go. First ball of the first innings, and what a start this is. First ball, boundary, and it was wide outside off stump as the batter just places that one nicely in the gap, and there was no one to stop the ball, as everyone, the fielders there, were watching the ball as it runs away down to the boundary for 4. So off the mark with the boundary here, it's 4 without loss in over number 1. It's been a positive start for NCC Nowpora as the two openers are out there in the middle. As you're watching the game live and exclusive on Global News Network and JK Sports Discovery on YouTube. The second final of the day, and it is Youngstar Reban taking on NCC Nowpora. They're batting first. We're in the first over as NCC Nowpora are 4 without loss. The second ball outside off stump. That's a wonderful shot, beautiful shot, and it has gone for a 6. Outside off stump, easy pickings for a batter as he throws his bat at this one, gets it high, handsome, and over that infield as the ball crosses the ropes within no time. Clear, crystal clear, positive start for the batter there. As we're yet to update the scorecard on your mobile screens. Rashid Rasool is donning the gloves, slip in place. There is backward up point, and now he comes down the track again. That is a superb shot, and once again he deliberately plays the ball in the air, and he doesn't want to keep the ball down, and he lifts that one up and over, covers, and this time the ball goes one bounce down to the fence for 4. The effortless batting, impressive start. First ball, boundary to the backward point region. Second ball, 6 over covers. Now third ball, this has been slashed away, one bounce and into the fence for 4. So NCC Nowpora, after a good start in the very first over, trying to tackle the situation, trying to tackle the swing of the bowler and trying to take him away by advancing down the track so that you can cover the swing of the ball. Mudassir Butt and Nasir is just taking him on. 14 runs he has scored of 3 balls. It's 15 without loss, and he's been joined by Tajammul Butt at the non-strikers end. Youngstar Reban up against NCC Green Nowpora as Mudassir goes again, and Nasir tries to drive it hard but doesn't get it off the bat. Has been well collected behind the stumps by Rashid Rasool, although he was also appealing for a stumping chance, but umpire there was standing firm as he says no, he declines the appeal, and the score on board is still 15 without loss. So Nasir starting in a positive fashion, couple of 4s and a 6. Has been now a good length delivery, and you see Rashid is up to the stumps now. He was witnessing that the batter was using the crease, he was leaving the crease, he was going down the track, and now he is up to the stumps to limit the footwork of the batter there. 2 dots on the trot. Next ball, and this is high, gone high up in the air. It could be a wicket, and has been taken by Amir. Nasir walks back, and finally Mudassir has the revenge. He has the last laugh. Nasir once again was trying to take him on, go for a big shot, and he gets it off the inside part of the bat, went flying up in the air as Amir at mid-off reverse cups and takes a brilliant catch, sends back Nasir as NCC Green Nowpora lose their first. It's 15 for the loss of 1. A wicket at the start of the innings for Youngstar Reban. That's what the doctor ordered. I mean, you've been asked to field the first.
support fence used it. Sorry for the inconvenience caused. There was a bit of network fluctuation and it has been sorted out now. And you can see Rashid Rasool, he was very quick to spot on that the batter was well short of the crease. He picks the ball and disturbs the timber. An umpire raises his finger. It's 15 for the loss of 2. Jahangir Lun is sending lots of love for NCC Green Nowpora. And in the meantime, Parraypora has joined the live broadcast. He's mentioning that his Khalid in the playing 11 will definitely convey you regarding the Sam. But at this stage, youngster Reban, they have got a wonderful start with 2 top order batters now back in the pavilion. An unfortunate way to get run out, Tajammul, but without facing a delivery. And I guess he was a bit indolent there, and Rashid Rasool was able to spot on. He was able to spot that the batter was short of the crease, and it's 15 for the loss of 2. Sohail, who has been introduced into the attack, and the new batter is in at number 4. 15 for 2 NCC Nowpora. And Sohail goes over the stumps for the second time in this over. Good length delivery outside off stump, bit pace and bounce on offer. As the batter was lining up for a cut shot, he doesn't get it off the bat, gets beaten as the ball goes into the gloves of wicketkeeper. Second over is in progress, and NCC Nowpora are 17 for the loss of 2 wickets. Imran Gulzar and Tajammul batter out there, and batting first NCC Nowpora. Although Nasir got off a flying start in the very first over of first 4 balls, he was trying to score runs at will, and this one has taken the outside edge and it flies to the third man boundary for 4. They had a fielder there, but the ball was travelling very quickly and the fielder couldn't cut it off. It runs away, crashes onto the boundary for 4. 21 for the loss of 2. Second over is in progress, and NCC Nowpora stand at 21 for the loss of 2 with Imran Gulzar batting on 4 of 3, and Tajammul batting on run a ball 1, although they have lost 2 wickets at the top of the innings. First one to depart was Nasir, and then second one to walk back to the pavilion was Tariq. Nasir was caught nicely by Amir at mid-off. The reverse cut, fine catch. Then a second wicket run out. We got to give credit to wicketkeeper Rashid Rasool there for spotting that the batter was outside the crease, and he headed his back, grounded back into the crease. And that is where an unfortunate incident happened, an unfortunate way to get run out. And 2 overs, it's 21 for the loss of 2. We'll try to get a partnership as the finals game, and it was a good toss to win for NCC Green Nowpora. That's why they decided to bat first. And they're batting first, and we look to put runs on board and give the bowlers a chance to defend the score. Although earlier it was a bit of technical issue, and Jahangir Lun is the part of live broadcast, and at this very moment I don't have the facility available to bring you the playing 11. Aboard the team is Parraypora. Welcome to the live stream, and once again Mudassir will continue, although he was proving to be a bit expensive in the first over when Nasir was batting. But the final ball he got rid of him, and that's why he could think that he has won a mini battle against him by getting rid of him. And in the meantime he will be once again back on his top up to bowl his second over, and up again his team will be Tajammul, but he's batting 1-1. Mudassir over the stumps with the first ball. Oh, that takes an inside edge, gone through the legs of wicketkeeper. The ball runs away quickly to the fine leg boundary, and it's a 4. The lucky boundary for Tajammul, but it was just outside off stump. Tajammul, he was trying to slash it hard. He gets an inside edge, and then the ball runs off the inside off of the bat. He could have easily gone on to hit the stumps, for this time Tajammul
luck was favoring him. The next ball, and he waits for the ball to come and just push it back and away with soft hands. Although there is a fielder at backward up point, there is no addition to the total. A fine little start for youngster Reban as 2 wickets at the top in the power play. Even though they will be trying to get at least one more to win the phase of the 6 overs with the Sippers again. And a good line and length. He's bowling those testing lines and lengths as the batter is off the back, pushes it back along the track. No addition to the total. It is the kind of line and length you need to approach to the batter so that you can keep him quiet for a long time. Next ball, and again the batter is watchful and careful. Simple push of the back foot down to the covers. There is a fielder, no addition to the total. And hopefully you'll be enjoying the live broadcast, and a couple of viewers are complaining about the audio quality and do inform us. With one more viewer joining is mentioning Rama Blasters won the game today. Yes brother, they won a one-sided encounter against SCC Raucha with a margin of 201 runs. And Reban, please inform us, is it audible to you now? Am I audible to you? Daramir, I will try to fix the issue as soon as possible so that you can enjoy the live broadcast. And see how good has been Mudassir Bhatt in this over. This is giving nothing to the batter to work with. He's been spot on and accurate, bowling onto the stumps. And 25 for the loss of 2 in over number 3. And Amidar, please mention. Now, am I nicely audible to you? Are you enjoying the game now? And the final ball tries to work it on the onside. Heave it on the onside. Doesn't get it off the middle of the bat. A little bit of inside part of the bat rolls to the scallop. The fielder there, 3 more overs completed, and it's 25 for the loss of 2. 25 for the loss of 2 it is, as NCC Green Nowpora have opted to bat first in this finals game. Although Nasir tried his level best to get 26 for the loss of 2 it is. Sohail is bowling his second over, and overall it's over number 4 in progress. Sohail goes outside off stump, nicely placed is that one, but fined as the fielder. It was a good looking shot, but cannot beat the fielder inside the ring. He wasn't able to pierce that gap, he wasn't able to thread that gap as the ball rolls to the cover region. There is a fielder, no addition to the total. The score on board is still 26 for the loss of 2. Next ball onto the pad, and it brushes the glove, rolls to the fine leg. There is a fielder though. The batters were thinking of a single, but the non-striker batter he denies. And Reban, I am absolutely sorry. He scores it to you, but we'll definitely try to sort the problem out so that you will enjoy the live broadcast. That's a good delivery again, a testing shot delivery, and the ball runs away to the third man region. Just give me a second, I will sort the issue out.
Mic testing. Hello, hello. Hello, hello, hello. Hello. .35 for the loss of 2 after 4 overs. Tajammul Bhatt getting some quality shots in the previous over, a brace, then a 6. Now a single off the final ball. So 10 runs coming up. Mudassir is over as well. In the meantime, Mudassir will bowl the fresh over wide outside off stump as the batter just flat bats the ball down to the mid-off region. There is a fielder inside the ring, Amir, and he tidies things up. He fielders the ball. There is no addition to the total. Sel, bicho do Bahia, link pra. Até chinoi sim, ama. E até sel, change coming. Sel.
Hello, hello, hello. Mic testing. Hello, hello. Hello, 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 hello. So the voice issue has been sorted out, and now we're back again. The final over of the field restrictions. Next ball, and he goes on the onside, mid-on inside the ring. A safe shot to play, and clears that mid-on fielder. Goes on the bounce to the mid-wicket boundary for 4. And he was watching. He was targeting that area, and he knows exactly where the fielders are. That is a beautiful strike as the ball races away to the fence for 4. It's 45 for the loss of 2. A partnership building on for NCC Green Nowpora as Tajammul and Imran Gulzar are doing the job nicely so far. It will be the 5th ball after 5.4 overs. It's 45 for the loss of 2. And Amidar, please inform us, are you enjoying the voice quality now, as we have tried our level best to sort the issue out, and hopefully it has been sorted out and the viewers are enjoying the game. In the meantime, Farooq goes again over the stumps to Imran Gulzar, and that's a back off leg delivery. Off the back foot he goes, but finds the fielder inside the ring. Was a good looking shot, but there is man inside the ring. No chance of a run, no addition to the total. It's 45 for 2 after 5.5 overs. As Farooq Bhatt has been introduced as a bowling change into the attack. First time the captain of young star Reban has made a change, and we'll have to wait and watch how he operates the final ball off the power play. And outside off stump, a chance for the batter to free his arm as he was trying to slash hard at this one, but doesn't get it off the bat, and has been signalled as wide. And Farooq Bhatt, you need to reload the delivery, rebowl. And thank you very much, Brother Amir, for informing us, and hopefully you now are enjoying the game. 46 for the loss of 2. The final ball of the power play coming in, Imran Gulzar, and I believe he is itching to go big. He wants to finish it on a high as the final ball, and takes the outside edge, goes on to the bounce straight to the hands of that short third man fielder. We are done with the power play, and NCC Green Nowpora has scored 46 runs for the loss of 2 wickets. The first one to depart was Nasir. The second one to walk back to the pavilion was Tariq Ahmed. So the power play completed, and Imran Gulzar and Tajammul Bhatt now stitching in a good partnership for the team, as they lost their 2 wickets on just 14 odd runs. But these 2 batters have really tied things up. These 2 really have complemented each other well, whether be it running between the wickets, and whenever it's been a bad ball they have tried to punish those balls away. And especially talk about Tajammul Bhatt. He is batting on 20 of 20 bowlers, and Imran Gulzar is batting on 9 of 8. And the second final of the day, this time it's Green Park Village Level Cup Parraypora going on at this stage, and 6 serves have been completed. The score on board is 46 for the loss of 2. The 7th over begins, and for the first time the signs of spin. The spin has been introduced into the attack by the captain Rashid Rasool, and he himself is behind the stumps, donning the gloves. Short third man in gully as well, point and cover, although he has deep point and long off out, patrolling the boundary line. On the onside there is 1 man at long on, 1 at wideish mid wicket, 1 at deep backward square leg. So nobody is inside the ring on the onside to save the single. Plenty of vacant spaces. If you talk about that cover region, it's pretty vacant towards that mid off, so you have those gaps on offer. You need to utilize those gaps. You need to find those gaps well, and those singles are going to do the job for you, because whenever you get those singles you continue to rotate the strike. That will help you a lot, and it will keep the scoreboard moving. First ball, and has been nicely punctured, goes down to the cover. The fielder is inside the ring, and the batters, although were thinking of a single, but denies them because the fielder was swooping onto the ball very quickly. As we watch But Shaheen
as he goes once again outside off stump. The batter goes off the back foot and works the ball nicely down to the long on region, and the batter steal a single. 7th over in progress. Going with a 6-3 field set, 6 on the offside, 3 on the onside, as But Shaheen in his first over. And a bit of short delivery as the batter was trying to use the pace by using the crease as well, although he times the ball well, but it rolls back to the bowler and there is no addition to the total. Next delivery of Shaheen outside off stump, makes room and gets an inside edge to the third man. A single and overthrows, and it yields a couple of runs. Overthrows 2 more runs, takes the score to 49 for the loss of 2 wickets after the completion of 6.4 overs. And this is the second game, the second final of the day, as you are watching it on Global News Network. But Shaheen in his first over and Imran Gulzar on 9. 11th with that brace, and then Tajammul Bhatt on 21 for the 5th time. Oh, that's a waiver delivery, should be a no ball and has been given as no. It slipped out of the hands of the bowler and he is wearing a smile on his face. The batter was even though baffled, where is the ball going, and it went over his head and into the gloves of wicketkeeper. Free hit coming up, and it doesn't yield anything. Wide outside off stump, although it's a wide, and the free hit will continue. With that wide, score moves on to 51 for the loss of 2 wickets. As we're in over number 7, Shaheen goes with a free hit ball and the batter hits it in the air. He has been caught at a point, but it doesn't matter, it doesn't count, as it was a free hit delivery. Still have got one more delivery left in this over, with 52 on board for the loss of 2 wickets. 7th over in progress, as NCC Green Nowpora batting first, and although they were flabbergasted when they lost those 2 wickets on just 14 odd runs. Oh, that's a wonderful shot, but again finds the fielder and not been able to find the gaps, not been able to rotate the strike though. 7 gone, and the score on board is 52 for the loss of 2. सात ओवर्स के बाद 53 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे, 52 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे, और ज़्यादा कोई ख़ास मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को हाथ खोलने का, जबकि बट शाहीन के पहले ओवर से 6 रन आए, 7 के बाद 52 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इमरान गुलजार और तजम्मुल भट्ट की जोड़ी बीच मैदान में है। नए ओवर की पहली गेंद, हालांकि इमरान गुलजार गेंद को ऑन साइड की जानिब खेलना चाहते थे, सही ढंग से गेंद को टाइम नहीं कर पाए और उनके थाई से टकराने के बाद गेंद पास में ही लुढ़कती हुई गई। गेंदबाज को खुद ही जाना पड़ा गेंद को फील्ड करने के लिए, और जब तक वो गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन बनाने का मौका था, और इस तरह से एनसीसी ग्रीन नौपोरा का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ये पारी का 8वां ओवर जारी है, और कुल मिला के अगर बात की जाए तो 53 रन बने हैं। अगली गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, क्रीज छोड़ के बाहर निकल आए थे बल्लेबाज और उठाकर मारने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले में कोई मुलाकात नहीं, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के ग्लव्स में। 8वां ओवर जारी, पहली गेंद पे लेग बाय, दूसरी गेंद डॉट। फारूक भट्ट अपने स्पेल का दूसरा और पारी का 8वां ओवर फेंक रहे हैं, और अभी तक 6 रन उन्होंने खर्च किए। इस बीच सूफी परवेज भी कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी वालेहाना इस्तकबाल करना चाहेंगे इस कमेंट्री बॉक्स में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस, और काफ़ी देर से जो है अकेले कमेंट्री निभा रहे थे, और इस वक्त 8वां ओवर पारी का जारी है। 53 मजमूई स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर एनसीसी ग्रीन नौपोरा का। तजम्मुल भट्ट जो कि टीम के सबसे
मजबूत बल्लेबाज है, वो इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं 27 के मजमूई स्कोर पर, जबकि उनका साथ निभा रहे हैं इमरान गुलजार और तजम्मुल भट्ट इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं 59 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। इसी बीच अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट फारूक अहमद, और गेंद को खेल दिया। फारूक अहमद खुद गए, गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 59 2 विकेटों के नुकसान पर 8वें ओवर का खेल जारी है और ये ग्रीन पार्क परिपोरा विलेज लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी है एनसीसी ग्रीन और यंग स्टार रेबन के माबैन। यंग स्टार रेबन की टीम इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी कर रही है, जबकि बल्लेबाजी एनसीसी ग्रीन कर रही है, और देखना होगा एनसीसी की ग्रीन की जानिब से क्या टारगेट सेट होता है यंग स्टार रेबन के लिए। दोनों टीमें मजबूत टीमें जानी जाती है इस एरिया की, और इस दौरान पुल करना चाहते थे ऑन साइड की जानिब तजम्मुल भट्ट, लेकिन नाकाम, और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों के जरिए वापस गेंदबाज के हाथ में। फारूक बॉलिंग मार्क पर, फारूक भट्ट। 8वें ओवर का खेल जारी, 59 मजमूई स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। और डार आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डार आमिर हमारे साथ जुड़े हैं, डार जावेद जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस लाइव नशरियात में लाइव नशरियात को जरूर शेयर करें ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और मुकाबले का आनंद ले सके। इस दौरान तजम्मुल भट्ट ने गेंद को खेला, गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन बनाने का मौका। 1 रन के इजाफे के साथ 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 60 मजमूई स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए एनसीसी ग्रीन का। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हिलाल अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप पांजला रफियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शाला स्पोर्ट्स टीम के कप्तान भी है। बॉलिंग मार्क पर बुलाया गया है एनसीसी बल्कि यंग स्टार रेबन की जानिब से बादशाहीन को। गेंद को खेल दिया है, लॉन्ग ऑन के फील्डर गेंद के पीछे, क्या रोक पाएंगे? बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब, अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा और यकीनन अपनी टीम के लिए रन्स बचाए। इस दौरान दोनों बल्लेबाज ने दौड़कर 2 रन मुकम्मल किए। 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62, 2 विकेटों के नुकसान पर। बादशाहीन बॉलिंग मार्क पर है। आतिफ अयूब हमारे साथ जुड़े हैं। यह मैच किस जगह पे है? परिपुरा रफियाबाद का स्पोर्ट्स फील्ड, बड़ा खूबसूरत मैदान और दिन का दूसरा फाइनल मुकाबला इस वक्त जारी है एनसीसी ग्रीन नौपोरा और यंग स्टार रेबन के माबैन। रिवायती हरीफ टीमें हैं। अगली गेंद जगह बनाकर गेंद को खेल दिया है तजम्मुल भट्ट ने और गेंद सीधे बॉडी लाइन को छू गई 4 रन के लिए। तजम्मुल जो इस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ उनके बल्ले से और इन 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अब 66, 2 विकेटों के नुकसान पर। 66 हो चुका है मजमूई स्कोर। नसीर भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आतिफ अयूब, नसीर भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर यह पारी का 9वां ओवर जारी है। 66 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। इस दौरान बड़ा स्ट्रोक और गेंद मैदान से बाहर, बहुत ज्यादा बाहर, 6 रन के लिए। तजम्मुल भट्ट के बल्ले से आने वाला यह बड़ा स्ट्रोक और गेंद और बल्ले के दरमियान सही कनेक्शन और गेंद सीधे मिड विकेट बाउंड्री से बाहर, 6 रन के लिए। एक बड़ा छक्का आता हुआ तजम्मुल के बल्ले से। तो 72 मजमूई स्कोर। एक और बड़ा स्ट्रोक, एक टप्पा खाने के बाद गेंद पॉइंट बाउंड्री को छूती हुई 4 रन के लिए। तजम्मुल भट्ट का बल्ला अब जो है आग उगलता हुआ इस मुकाबले में लगातार 3 गेंदों पर बड़े स्ट्रोक्स, 3 बड़े स्ट्रोक्स और कुल मिलाकर 76 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर।
तजम्मुल बट 32 गेंदों का सामना करते हुए 44 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं। सिर्फ एक स्ट्रोक चाहिए उन्हें अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। तजम्मुल बट बिल्कुल तैयार गेंद का सामना करने के लिए। बट शाहीन है बॉलिंग मार्क पर और सामने है तजम्मुल बट। ओवर द विकेट, छोटा सा रनअप, 7 कदमों का रनअप, अंपायर को क्रॉस किया, बड़ा स्ट्रोक 6 रन के लिए और तजम्मुल बट की यहां पे निस्फ सेंचुरी मुकम्मल होती हुई, निस्फ सेंचुरी मुकम्मल होती हुई तजम्मुल बट की 52 बनाए 33 गेंदों का सामना करते हुए। लाजवाब बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए तजम्मुल बट इस फाइनल मुकाबले में एनसीसी ग्रीन नवपोरा के लिए 82 स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर 9वें ओवर का खेल जारी है। बट शाहीन है बॉलिंग मार्क पर, एक मतबा फिर तजम्मुल सामना करेंगे। अभी तक महंगा ओवर साबित होता हुआ 5 गेंदों पर इस ओवर में 22 रन आए हैं। 5 गेंदों पर 22 रन आए हैं। अब ओवर की आखिरी गेंद के साथ शाहीन और सामने है तजम्मुल बट। 50 रन बनाए 33 गेंदों का सामना करते हुए तजम्मुल ने गेंद की ऑप्शन पर गेंद को खेल दिया, फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ओवर मुकम्मल, 22 रन आए इस ओवर से। 9 ओवर्स के बाद मजमूई स्कोर है 82। 50 रन बनाए 34 गेंदों पर, 4 छक्कों और 4 चौकों की मदद से तजम्मुल बट ने, जो कि इस वक्त नाबाद बल्लेबाज है और साथ निभा रहे हैं उनका इमरान गुलजार। 82, 2 विकेटों के नुकसान पर 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल। और मुकाबला जीतने वाली टीम पररेपोरा ग्रीन पार्क पररेपोरा विलेज लेवल टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम करेगी। कौन सी टीम होगी? क्या यंगस्टर रेबन की टीम होगी या फिर एनसीसी ग्रीन नवपोरा? इस दौरान हमारे साथ जुड़े हैं मलिक सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और नसीर भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं लाइव नशरियात में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और लाइव नशरियात को जरूर शेयर करें ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और मुकाबले का आनंद ले सके। आप हमें फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। 46 गेंदों पर 65 रन की शराकतदारी हुई है तजम्मुल भट्ट और इमरान गुलजार के दरमियान। अब बॉलिंग मार्क पर बुलाया गया है आमिर हुसैन को। आमिर हुसैन है बॉलिंग मार्क पर, सामना करेंगे उनकी गेंद का तजम्मुल भट्ट, बल्कि आमिर गुलजार जो इमरान गुलजार जो है वो सामना करेंगे उनकी गेंद का। कुर्सी पे 82 मजमूई स्कोर। बॉलिंग मार्क पर आमिर हुसैन, सामने है उनके इमरान गुलजार। इमरान के लिए ओवर द विकेट आमिर हुसैन। 10वें ओवर की पहली गेंद लेग स्टंप के आसपास उछाल लेती हुई गेंद को खेलना चाहता ऑन साइड की जानिब, गेंद बल्ले पर पूरी तरह से आई नहीं। बल्लेबाज के ग्लव्स को छूने के बाद विकेट कीपर आए, उन्होंने गेंद को मुख्तलिफ हाथों के जरिए अब गेंद जो है वापस आमिर हुसैन के हाथ में। आमिर ओवर में अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट। गेंद की इस मरतबा इमरान गुलजार के लिए बल्ले का निचला हिस्सा लेती हुई गेंदबाज खुद गए, गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। आतिफ अय्यूब, फैसू बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वॉचिंग फ्रॉम दिल्ली। आतिफ अय्यूब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बॉलिंग मार्क पर आमिर हुसैन और सामने है उनके इमरान गुलजार। इमरान गुलजार के लिए ये पारी का 10वां ओवर जारी है। 82 मजमूई स्कोर, स्लो ओवर 1, और वहां पर गेंद को खेलना चाहता ऑन साइड की जाने, पूरी तरह से बीट हुए। कहा जाएगा कि इस गेंद पर जो है बल्लेबाज को बीट करने में कामयाब इमरान गुलजार बल्लेबाज है। 10 रन बनाए, 16 गेंदों का सामना किया इमरान गुलजार ने। 82 स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर 10वें ओवर का खेल जारी है। आमिर हुसैन एक मतबा फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग मार्क की जानिब जाते हुए अभी तक 3 डॉट गेंदें फेंक चुके हैं इस ओवर में, और ये ओवर की चौथी गेंद होगी। 3 डॉट गेंदें फेंक चुके हैं इस ओवर में आमिर हुसैन। अगली गेंद ओवर द विकेट, गेंद की इस मतबा बल्ले का बाहरी किनारा, बाकी का काम तमाम किया फील्डर ने, स्लिप में जो फील्डर थे, और यहां दूसरी बल्कि तीसरी विकेट गिरती हुई और इमरान गुलजार आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके। लगातार 3 डॉट गेंदें और उसके बाद यह विकेट हासिल, आमिर हुसैन के खाते में जाने वाली विकेट। डार आकिब जुड़े हैं बेंगलुरु से, बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ अय्यूब जुड़े हैं, फैसल जुड़े हैं, आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया लाइव नशरियात में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर 82 स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर यह 10वें ओवर का खेल जारी है।
और जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सब व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और मुकाबले का आनंद ले सके। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और क्रिक हीरोज़ ऐप पर बैक वक्त देख सकते हैं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया लाइव नशरियात में हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और मुकाबले का आनंद ले सके। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और क्रिक हीरोज़ ऐप पर बैक वक्त देख सकते हैं। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात में कुल मिलाकर 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। मजमूई स्कोर बल्कि 9.3 ओवर्स का खेल हो चुका है। 82 स्कोर 3 विकेटों के नुकसान पर। हम कोशिश करेंगे कि दूसरे एंगल से भी आपको जो है महसूस कर सकें और दूसरे कैमरा का इस्तेमाल कर सकें। इस दौरान आप सब व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और मुकाबले का आनंद ले सके। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और क्रिक हीरोज़ ऐप पर बैक वक्त देख सकते हैं। हम चेंज करें दप नौ लिंक तरह तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और मुकाबले का आनंद ले सके। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक के साथ साथ जो है क्रिक हीरोज़ ऐप पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क, यूट्यूब पर जेके स्पोर्ट्स डिस्कवरी और इसके अलावा आप हमें क्रिक हीरोज़ ऐप पर भी देख सकते हैं। हम दूसरे एंगल से आपको जो है मैदान का थोड़ा बहुत व्यू दिखाना चाहेंगे। मेरे साथी फिरदौस जो है इस बार कोशिश करेंगे और आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया इस दौरान हमारे साथ जुड़ने के लिए। बोर्ड हो बोर्ड होते बोर्ड आया गो कने रुक अच्छा चाहिए हुई थी तो नियत तो जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और मुकाबले का आनंद ले सके। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और क्रिक हीरोज़ ऐप पर बैक वक्त देख सकते हैं। यूट्यूब पर जेके स्पोर्ट्स डिस्कवरी और थोड़ा बहुत सब्र इस दौरान 11वें ओवर का खेल शुरू हो चुका है और यहाँ पर बल्कि 10वें ओवर का खेल जारी है। और हम थोड़ा सा जो है आपको जूम करके दिखाना चाहेंगे एंटी ड्रग के हवाले से जो है ये यहाँ पर स्लोगन ये यहाँ कहा जाएगा कि कैंपिंग है और जो इस स्लोगन के हवाले से आपको जानकारी देना चाहूँगा। एंटी ड्रग और ड्रग एडिक्शन के हवाले से जानकारी मैसेज एक आम लोगों के लिए और जिनकी तरफ से है ये A to Z प्लम्बर्स जो कि जिसके ओनर है मीर तौसीफ और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देना चाहूँगा 9797 81 3491। एंटी ड्रग के हवाले से इन्होंने यहाँ पे एक अच्छा मैसेज जो है उसका उस हवाले से एक बैनर लगाया है जिसमें ड्रग डी एडिक्शन के हवाले से जो है जानकारी दी गई है। एक बेहतरीन मैसेज और A to Z प्लम्बर्स की जानिब से ये जो है मैसेज आप तक पहुँचाया जा रहा है। और
हम डिस्प्ले पे दोबारा से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वीआईपी स्टैंड भी दिखा रहे हैं आपको। मेरे साथी फिरदौस जो है इस काम में लगे हुए हैं और ये दूसरा एंगल जो है इस मैदान का वो आपको दिखाना चाह रहे हैं और आप ज़रूर हमें जो है इस हवाले से जानकारी दीजिएगा कि ये आपको कैसा लग रहा है। हम बीच बीच में जो है मुख्तलिफ मैदानों में आपको इस तरह का जो है व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथी फिरदौस जो है लगातार जुड़े हुए हैं। इस दौरान दूसरे एंगल से आप मैच भी देख सकते हैं। इस दौरान गेंद को खेल दिया है और गेंद सीधे 6 रन के लिए। ये छक्का आता हुआ तजम्मुल बट के बल्ले से। दोबारा से आपको जो है मैदान का थोड़ा बहुत व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वीआईपी स्टैंड है जहां पर कुछ मुअज़्ज़ज़ मेहमान और ये एंटी डग के हवाले से जो है बैनर भी लगा हुआ है वीआईपी स्टैंड में। एक और बड़ा स्ट्रोक, एक और बड़ा छक्का, ये आपको रिप्ले में जरूर दिखाना चाहूंगा। रिप्ले में आपको जरूर दिखाना चाहूंगा किस तरह से ये छक्का लगा है। ये आप रिप्ले में देख सकते हैं। एक बड़ा स्ट्रोक 6 रन के लिए। तो एंटी ड्रग के हवाले से जो है मैसेज आप तक पहुंच रहा है A to Z प्लम्बर्स की जानिब से। और अब आप हमें देख सकते हैं, हमारा जो है कमेंट्री बॉक्स भी आप देख सकते हैं। इसी बीच अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट, गेंद के ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स भी आप दूसरे एंगल से, दूसरे कैमरा से देख रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस, इस काम में लगे हुए थे। फिरदौस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ मैच की सूरत हाल, तो मैच की सूरत हाल 94, 3 विकेटों के नुकसान पर 10.3 ओवर्स के बाद। दस 10.3 ओवर्स का खेल हो चुका है और मजमूई स्कोर है 95, 2 विकेटों के नुकसान पर, बल्कि 3 विकेटों के नुकसान पर। इरफान है बॉलिंग मार्क पर और रियाज डार उनका सामना करेंगे। इस दौरान गेंद को खेल दिया, फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 95 स्कोर, 11वें ओवर का खेल जारी है और 11वें ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे इरफान, सामना करेंगे उनकी गेंद का रियाज डार। इरफान रियाज डार के लिए ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की उछाल लेती हुई गेंद ऑन साइड की तरफ, गेंद को हल्के हाथ के साथ खेल दिया, फील्ड विकेट कीपर गए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, शॉट स्क्वायर लेग पर। इस दौरान 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। 11 ओवर्स के इख्तिताम पर मजमूई स्कोर है 96, 3 विकेटों के नुकसान पर। Now NCC Green Nowpora will be thinking they are at a stronger position of the game after those 2 quick wickets, and they lost 2 wickets on just 16 or 17 runs, but then it was Tajammul Butt and that Gulzar stitching in a good partnership for the team, although he is back into the pavilion now after 11 overs. The score on board is 96, so it is just a shade over 9 runs per over. And looks like it's going to be a high scoring game again, that we witnessed the first final of the day. And in the meantime, Amir Hussain will be bowling the first ball of the fresh over. And he's been right on the money, Amir Hussain. And he has got a wicket as well. That was a wicket maiden over which he bowled against Gulzar. And then those 3 balls to the new batter, Riaz Dar, who is batting on 1 of 5, 96 for the loss of 3. Now Dar Akif, Fayaz Ahmadar and Lone Yavar, Shaukat Keema watching the game, and this one is onto the pad, sending nicely, flicks it away. It was coming onto the hips of the batter. Call is for 2 and they have completed 2 more runs. Lone Yavar, and he's mentioning that it could be 175 on board. And in the meantime, Shoaib Lone is watching from Gurez Valley. It's 98 for the loss of 3. Amir over the stumps for the 3rd time, a slower delivery, and it deceives the batter completely, and it beats everyone. Will have to wait as Rashid is appealing, and he is claiming that the ball hits the timber, the ball hits the stumps.
and we'll have to wait and watch. The leg umpire is going to have a word with the standing umpire there, as Rashid is claiming that the ball hits the timber and then rolls down to the fine leg region, and he's being given out. There are no bails onto the stumps, I guess, and the ball just ricochets off the stumps. It hits the timber and then rolls away down to the boundary for 4, and then Rashid was claiming that the ball just ricochets off the timber, and the leg umpire was having a word with the standing umpire, and both, after a short discussion, signaling out, and Riyaz has to take a long walk back to the pavilion. But that was a well disguised slower delivery. The way Amir Hassan is using his slower delivery is the prime weapon of a bowler when you are bowling in that's what we call in a T20 game, in a shorter versions of the game. That was nicely bowled, a slower delivery, and I could say that the on-field decision is out. The umpire is having a word with the batter. The game has been paused for a while, and we'll have to wait and watch as the two officials, after having a word with each other, decided that it's out, and दादा सेकंड रोल करो फुल स्क्रीन करो वेटिंग स्क्रीन में वापस ब्रुक पकना है यस ये लास्ट बॉल है There is a short pause in the game as the umpires want a confirmation whether it ricocheted off the stumps, and as we watched the replays, and it looks like the ball didn't ricochet off the stumps, but we'll have to wait for the official decision, and in the meantime the game has been paused for a while, so we'll join you after a short little break. Gasa YouTube speed gasa path ya dan seper ball Victor here is a ball YouTube speed bhai Bhai yaar ball Victor mas jealous to logo jealous to jo logo ya
Yes, sure, boss. तो जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ डिसीजन के हवाले से मैच रुका हुआ था और चूंकि हमारा जो यहाँ पे अभी भी इस ओवर में 3 गेंदों का आना बाकी है, 3 गेंदों का आना बाकी है। बैश यतु नए बल्लेबाज आए हैं। 98 स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर 11.3 ओवर्स के बाद 11.3 ओवर्स के बाद जो है ये 98 स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर बैश यतु बैश यतु जो है नए बल्लेबाज आए हैं और कुछ यहाँ पे आतिफ अयूब हमारे साथ जुड़े हैं, समीर जगरू भी जुड़े हैं और कुछ जो है यहाँ इशू आया था विकेट को लेकर। हालांकि हमने जो है ऑन फील्ड अंपायर को रिप्ले के जरिए दिखाया भी था, लेकिन उसके बावजूद जो है फैसला बल्लेबाज के खिलाफ गया है, बल्कि बल्लेबाज के खिलाफ, जी हाँ। और इस तरह से अगली गेंद को खेल दिया बैश यतु ने 1 रन के लिए, बल्कि रन कोई नहीं मिला, डॉट गेंद। आमिर हुसैन है बॉलिंग मार्क पर। कुल मिलाकर 98 स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। 98 मजमूई स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सब व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को जरूर शेयर करें ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके। आमिर हुसैन ये 12वें ओवर की 5वीं गेंद बैश यतु के लिए, गेंद को खेल दिया है ऑन साइड की जानिब, लेकिन फील्डर मौजूद, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को फील्ड किया गया। इस दौरान 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 99, 4 विकेटों के नुकसान पर। 12वें ओवर की आखिरी गेंद अब फेंकेंगे आमिर हुसैन। 12वें ओवर की आखिरी गेंद के साथ मजमूई स्कोर है 99, 4 विकेटों के नुकसान पर। जी अनवार हमारे साथ जुड़े हैं। मैच किस टीम का हो रहा है? ये एनसीसी ग्रीन नोपरा और यंगस्टार रेबन के माबैन मुकाबला जारी है। मीर मुबी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अयूब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इनके साथ साथ आतिफ अयूब जुड़े हैं, समीर जगरू हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ साथ शोएब लोन भी हमारे साथ जुड़े हैं वॉचिंग फ्रॉम गुरेज वैली। बट इम्तियाज भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 100 मजमूई स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। तजमुल भट्ट 64 रन पर खेल रहे हैं जबकि बैश यतु ने 1 रन बनाया है। Bash Yatu just arriving at the crease after 12 overs, 100 for the loss of 4. But it has been a whole lot story the way Tajammul Bhatt has played. 64 of just 39 bowlers. Over number 13 to get underway from the commentary box, and it's Mohammad Rafi who has been once again introduced into the attack to bowl from the com box end. 8 more overs to go, and if they get 10 and over, they could go up to 180. First ball, and down the track goes Tajammul. A cross-batted wipe across the line to the mid-wicket region, and the batters are happy with a single. Bash Yatu, although was interested to come back for a second, but Tajammul wasn't interested at all, and he was showing no interest to turn back, and he sends Bash Yatu back in time. A single of the first ball, as he's off the mark. Bash Yatu with a single in that previous over. Next ball, just guides that one with an open face off the bat. There is fielder inside the ring. Trying to control things here, youngster Reban, as they would be trying to pick wickets, especially in the middle overs now, the middle phase of the game. And Bash Yatu, the new batter at the crease, will try to put pressure on him, feeding him with those dots. So it's a short ball, and he could have easily hit this one to the boundary, but to no prevail to the batter, he hits it straight to the fielder at deep scab again, will get a single. And just doing the job in singles and doubles at this stage. NCC Nowpora will look to go up to 170, 180 as there are 6 wickets in hand with 8 more overs to go. Next ball to Tajammul. That's right in the block hole, and Tajammul drags that one to long off.
The fielder there a single, 5 runs off this over so far, 3 runs off this over so far, and 4 bowlers, a single of the first, then dot, now a single, and the single of the next ball again. Bash Yutu, who is in at number 6 after the departure of Riaz. That was very unfortunate to get out, as Rashid Rasool claiming that the ball hits the timber, but unfortunately after checking the ball was going above the stumps, it was going over the stumps. And the final ball again too full to the batter, as he jams the ball too long on. 4 runs off this over as well. 13 overs gone, 104 for 4. And out of those 104 runs, Tajammul Butt has scored 66 runs. And I could say that bulk of the scoring is done by this man. And at this stage, they're going nearly at 8.5 runs per over. 104 for the loss of 4 wickets. 7 more overs to go, and if they keep wickets in hand, if they have those resources in hand, after 15 or 16 overs, they could really try to up the ante. They could really put foot on the accelerator to accelerate the innings and to get some runs under the belt, as Amir goes with the first ball of his 3rd over. Good delivery, and look at the spot where he is bowling. Not too full, not too short. He's got a good length spot continuously, and has been able to keep batters quiet and keep them at bay. He has got 2 wickets, as in his 3rd over first ball. It's a dot, no run onto the first ball. 104 for the loss of 4 it is. As Amir once again goes to bash Yutu, and he launches him away. What a shot that is! Has gone into the stand as for a 6. As up to the batter, and bash Yutu swings and swings mighty into the stands. As Bashir Ahmed is giving us information that second semi-final, which is being played at late Mir Shafi Sports Field, Rama Blasters are 51 for the loss of without wicket in 2 overs. And in the meantime, Bash Yutu has offered a catch at deep cover region, and he has to take a long walk back. After hitting a 6, Amir strikes once again. He bags his 3rd wicket of the day, as Bash Yutu was once again trying to go for a big shot. Deliberately hits it in the air, doesn't keep it down, and the fielder takes it quite easily. No mistake by the fielder there. The half of the side is back in the pavilion after 13.3 overs. Bash Yutu departs on run ball 9, a 6 of the previous ball, and now he walks back to the pavilion. And NCC Green Nowpora, the ship is sinking as they keep losing their wickets away, as Bash Yutu makes his way back into the pavilion. The new man is in the meantime. We have Gulzar Dumper Vlogs, and then we have Bel Ira sending in love for Bash Yutu, Shuman Gill and GNWR. It's young star Reban taking on NCC Green Nowpora, and before that we have Mir Mubi. Walaikum Salam. He has been joining the live broadcast, and in the meantime, Bashir Ahmed is mentioning that Rama Blasters, who won the first game, the first final here against SCC Raucha, they're playing the second game of the day, and again is Rising Star Rohama. They have scored 51 runs in just 2 overs. That is quite a remarkable feat, a remarkable achievement. The team is going through a purple patch, and they are just winning those games for fun. Faizan Naiku is the new man, as he arrives at number 7. Need a partnership here, as Bash Yutu though was trying to get some runs under his belt, as he was trying to accelerate things after hitting a 6. And once again you could have rotated the strike well, but he line is up. He winds up for a big shot, and he offers a very, very simple catch to the fielder, as Faizan Naiku is the new man. He arrives at the crease at number 7, and Amir Hassan has been excellent with the ball today. 2.3 overs, 3 for 10. As for the first time, Faizan is going to face him, and again he's right on the money. Faizan tucks it off the back foot, although stealing the single right in front of the fielder. He was inside the ring though, but good call between these two, complementing each other very well and pointing in each other's eyes to score that single. Good running between the wickets.
It's Nelson on board for the loss of 5 after 13.4 overs. So 2 more deliveries to get in. Amir is over. Tajammul Butt to face. The 5th ball. Tajammul clips him off the pads. Nicely works it away. Although the ball trickles away, dribbles down to the mid-wicket. Stops on its own as towards that region there isn't that great outfield. It's a bit sluggish in nature. The final ball coming up, and over number 14 in progress. The final ball coming up, 112 for the loss of 5. So going at 8.7 runs per over, 8.07 though. The final ball of Amir's third over, and Faizan Naiku gets ready to face. The final ball of over number 14, it's down the leg side, and Amir has to reball, signalled as wide, and Rashid isn't happy. Just gifting away those wides that are additional run added to the score of NCC Green Nowpora, and the score moves on to 113 for the loss of 5. Amir has been amongst the wickets today, 3 wickets to his name, 3 wickets to his column with the final ball. Capped a bit low as Faizan Naiku just punches that one away. Nice little shot, but the fielder is inside the ring. Done with over number 14 as well. 113 for the loss of 5. 6 more overs to go, and we'll have to wait and watch where they are thinking about the game, where they are thinking about the target. Even anything above 170, 180, they will take that with 6 overs to go, and will definitely eye 60, 70 runs. शुक्रिया फिरदौस आपका। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 14 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, और मजमूई स्कोर है 113 5 विकेटों के नुकसान पर। रफ़ी को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर, और सामना करेंगे तजम्मुल बट, जिन्होंने 42 गेंदों पर 67 रन की लाजवाब पारी खेली है। तजम्मुल बट तैयार गेंद का सामना करने के लिए, और सामने है एम रफ़ी के। एम रफ़ी बॉलिंग मार्क पर इससे पहले 1 ओवर किया, 4 रन दिए रफ़ी ने, और अब पारी का 15वां ओवर इनफरादी तौर उनका दूसरा ओवर यंगस्टर रेबन के लिए, जबकि एनसीसी ग्रीन नौपोरा के लिए तजम्मुल बट सामना करेंगे उनकी गेंद का। एम रफ़ी छोटे से रनअप के साथ ओवर द विकेट, वहां पर रोका अंपायर ने, बल्कि बल्लेबाज ने कुछ, तजम्मुल बट बल्लेबाज थे, उन्होंने रोका गेंदबाज को, और अब गेंदबाज बिल्कुल तैयार बॉलिंग मार्क पर ओवर में अगली गेंद के साथ। ये 15वें ओवर की पहली गेंद होगी। 15वें ओवर की पहली गेंद के साथ ओवर द विकेट, छोटा सा रनअप, गेंद की बल्ले का अंदरूनी किनारा और बल्लेबाज के पैड को छू गई। तजम्मुल बट वहां पर बल्लेबाज, और इस दौरान रन बनाने का कोई मौका नहीं। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब व्यूवर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को जरूर शेयर करें। और इसी बीच मोहम्मद रफ़ी अगली गेंद के साथ गेंद को खेल दिया है, पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, बल्ले का निचला हिस्सा लेती हुई लॉन्ग ऑन के फील्डर गए, 1 रन बाद दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन मना किया वहां पर, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 114। फैजान नाइकू जो है वो अब सामना करेंगे एम रफ़ी की गेंद का। एम रफ़ी बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार, फैजान नाइकू उनकी गेंद का सामना करेंगे। फैजान के लिए मोहम्मद रफ़ी गेंद की बैकफुट पर गेंद को खेल दिया, फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। हालांकि तजम्मुल काफी आगे गए थे रन लेने के इरादे से, लेकिन इरादा तर्क करते हुए वापस अपनी क्रीज तक पहुंचने में कामयाब। एम रफ़ी बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार, विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। रेबन के लिए राशिद रसूल, अच्छी गेंद, इस मरतबा थोड़ी नीचे रहते हुए ऑफ स्टंप के बिल्कुल करीब से विकेट कीपर के दस्तान में है, विकेट कीपर के दस्तानों में। और कुल मिलाकर जो है मजमूई स्कोर यहां पर 114। अगली गेंद को खेल दिया, हवा में शॉट, फील्डर नीचे, और उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो इस तरह से फैजान नाइकू की इनिंग का खात्मा। फैजान आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए 114 के मजमूई स्कोर पर यह 5वीं बल्कि 6ठी विकेट गिरी है फैजान नाइकू के रूप में। कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन गेंद को ज्यादा लंबा खींच नहीं पाए, और लॉन्ग ऑन के फील्डर ने बिना किसी गलती के कैच हासिल किया।
तो 114 के स्कोर पर ये छठी विकेट गिरी एनसीसी नवपुरा ग्रीन की। अयान आए हैं नए बल्लेबाज, सामना करेंगे रफ़ी की गेंद का और साथ निभाएंगे तजमुल बट का। 114 6 विकेटों के नुकसान पर 14.5 ओवर्स के बाद ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे एम रफ़ी और सामना करेंगे उनकी गेंद का क्रीज पर आने वाले नए बल्लेबाज अयान। अयान को कुछ सलाह मशवरा देते हुए तजमुल बट, जिन्होंने 68 रन की लाजवाब पारी खेली 44 गेंदों का सामना करते हुए। पीर इनाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आमिर बट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आमिर बट, पीर इनाम। अगली गेंद, इस दौरान गेंद को हल्के हाथों के साथ खेला जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन बनाने का मौका, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 115 12 बल्कि 15 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। मजीद 5 ओवर्स का आना बाकी है, कुल मिलाकर 30 गेंदों का आना बाकी। और तजमुल बट जितनी देर तक क्रीज पर रहेंगे मुझे लगता है कि स्कोर बोर्ड आगे जाएगा, लेकिन उसके बाद देखना होगा आने वाले बल्लेबाज कौन से होंगे। क्या जारहाना रुख इख्तियार करेंगे नसीर अयान अब 16वें ओवर में आमिर हुसैन की गेंद का सामना करेंगे। यंग स्टार रेबन और एनसीसी नवपुरा ग्रीन के दरमियान ये विलेज लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला और दिन का दूसरा फाइनल मुकाबला इसी मैदान पर इस वक्त जारी है। पहले फाइनल मुकाबले में एक बड़े मार्जिन के साथ 200 से ज्यादा रन्स के मार्जिन के साथ रहमा ब्लास्टर्स ने मैच जीत लिया था। आमिर हुसैन 16वें ओवर की पहली गेंद के साथ अयान सामना करेंगे उनकी गेंद का। आमिर हुसैन बॉलिंग मार्ग पर, जहांगीर लोन यूनाइटेड नवपुरा टीम के जो है कप्तान भी है और कहा जाएगा टीम के कोच भी है, वो हमारे साथ जुड़ते हुए। अगली गेंद, ये 16वें ओवर की पहली गेंद, अंपायर को क्रॉस किया, नो बॉल का इशारा और इस दौरान रन का इजाफा और फ्री हिट भी होगी। नो बॉल का इशारा आता हुआ और कुल मिलाकर जो है आमिर हुसैन अब बॉलिंग मार्क की जा रहे वापस जाते हुए। आमिर हुसैन आमिर हुसैन जो है वो यहां पर सामना करेंगे अगली गेंद का। आमिर हुसैन, बल्कि आमिर हुसैन की गेंद का अयान सामना करेंगे। आमिर हुसैन ओवर में फ्री हिट गेंद और जारहाना अंदाज से खेलने की कोशिश नाकाम और कोई फायदा नहीं उठा पाए उस फ्री हिट गेंद पर अयान, और गेंद आहिस्ता आहिस्ता अब मुख्तलिफ हाथों से गुजरती हुई फील्डर गेंदबाज के हाथ में। जहांगीर लोन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद आने वाला बैट्समैन होगा, देखना होगा, गालिबन खालिद ने पैड लगाए हैं। खालिद, पीर इनाम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। इसी बीच आमिर हुसैन अयान के लिए अच्छी गेंद, बैकफुट पर खेलने की कोशिश, उछाल, तेजी के साथ गेंद, विकेट कीपर राशिद रसूल के दस्तानों में। राशिद रसूल विकेट के साथ चिपके हुए हैं और बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे कि वो कदमों का इस्तेमाल करे। 116 6 विकेटों के नुकसान पर 16वें ओवर का खेल जारी है। आमिर हुसैन अयान के लिए ओवर में चौथी गेंद के तीसरी गेंद के साथ, गेंद के इस मरतबा बल्ले और गेंद के दरमियान कनेक्शन, फील्डर गेंद के नीचे और एक टप्पा खाने के बाद गेंद उनके हाथ में जाते हुए इस दौरान 1 रन का इजाफा, स्कोर में स्कोर बढ़ता हुआ 117 6 विकेटों के नुकसान पर एनसीसी ग्रीन नवपुरा का। एनसीसी ग्रीन नवपुरा का स्कोर 117। ये 16वें ओवर का खेल जारी है और 16वें ओवर की चौथी गेंद फेंकेंगे आमिर हुसैन, सामना करेंगे उनकी गेंद का तजमुल बट। तजमुल बट के लिए जिन्होंने 68 रन बनाए हैं, गेंद की बैकफुट पर गेंद को खेल दिया, फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। तजमुल बट एक मरतबा फिर सामना करेंगे आमिर हुसैन की गेंद का। 16वें ओवर का खेल जारी, 117 है मजमूई स्कोर। 117। आमिर हुसैन अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। 3.4 ओवर में आमिर हुसैन ने
16 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। दानिश जरगर हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगली गेंद तजम्मुल के लिए ऑन साइड पर, गेंद की रफ्तार को कम किया था और गेंद को खेलने में कामयाब। फील्डर गेंद के पीछे 1 रन बना, दूसरे रन के लिए गए हैं और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ, तो 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अब 118। 6 विकेटों के नुकसान पर 16वें ओवर का खेल जारी। 119 हो चुका है और ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे आमिर हुसैन। सामने एक मतलब फिर तजम्मुल बट, 70 रन पर खेल रहे हैं तजम्मुल बट। दानिश जरगर बहुत बहुत शुक्रिया। जहांगीर लोन भी हमारे साथ जुड़े हैं और इनके साथ साथ पीर इनाम जुड़े हैं, आमिर बेग जुड़े हैं और रहमा ट्रेड प्रेसिडेंट बशीर अहमद वार भी हमारे साथ जुड़े हैं। 119, 16वें ओवर का खेल जारी और आखिरी गेंद के साथ आमिर हुसैन। सामने है तजम्मुल जिन्होंने 70 रन बनाए, गेंद को खेल दिया है। फील्डर मौजूद, शॉट कवर पर, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ओवर मुकम्मल। 16 ओवर्स के बाद मजमूई स्कोर 119। 6 विकेटों के नुकसान पर मजीद 4 ओवर्स का आना बाकी और देखना होगा 4 ओवर्स में मजीद कितने रन आ जाते हैं और क्या टारगेट सेट होता है यंग स्टार रेबन के लिए। Yeah, setting a target here, but last 4 or 5 overs runs have completely dried up. As after 10 overs, the score on board was 96. Last 6 overs, they have been able to score 20 or 30 odd runs, which hasn't come to the party of NCC Green Nowpora. They need runs thick and fast with just 4 overs left in the first innings. Tajammul, a well set batter, although he has been the lone fighter. It has been a solo show with his bat so far. But he has been deprived of strike last couple of overs. He hasn't got a much strike, and that is the result. There has been an absolute stoppage on the run scoring, and the run rate has gone down as well. It was 8.5. It is now just shade over 7. So NCC Green Nowpora, they just need to have a look at this with 4 overs. We'll look to get at least 50 more out of those 4 overs to post at least 160, 170, where can give their bowlers a chance to bowl upon that score. They can bowl with that's what we call freedom, or they can bowl with liberty and bowl with that open hearts. Again, it's young star Reban. But you got to give credit to young star Reban as well, the bowlers, especially Amir Hassan. He has bowled 4 overs, 3 for 17 today. Excellent bowling figures in the finalist game. He has done the job nicely with the ball. He has kept things quiet and has kept the batters under check as well. Hasn't given anything to work with. And those 3 wickets at the top, I could say, in those middle overs has really kept things well under control for them. And will be over number 17. And it's Tajammul Butt who is batting on 70, and Ayan, who arrived at the crease, is a newcomer though. He is batting on 2 of 5. Have a time to go big, 4 wickets in hand, and just try to find some big overs here. Those last 4 overs, the death stage of the game. As the first ball of over number 17, over the stumps he goes and clean bowls him. 7th wicket, and a wicket off the very first ball of the fresh over. So Tajammul, the non-strikers, and can't do it alone. He needs at least some support from the other batters, but it hasn't come to the party, as the batters haven't been able to give him that support which he needed. And he is just left stranded at the other end. First ball a wicket, and Mir Aqib Ahmed. And we got Rami as well. And thank you very much, Mir Aqib, for joining us, for staying connected with us. And the first ball, Rafi has clean bowled Ayan as he tries to go across the line, and he misses the ball completely. And then it cannons on to the stumps. So a wicket off the very first ball. And at this stage, I could say that NCC Green Nowpora, the dugout looks flabbergasted. The dugout looks shell-shocked, as 96 for the loss of 3 odd wickets, and now you could see 119 for the loss of 7. They're losing that plot. They were on a right track, but has been Amir Hassan's wonderful spell, and now Rafi getting the wicket off the first ball of the fresh over. Jahangir Lone and Irfan Yusuf, walaikum salam. With 119 for 7, 23 bowlers to go in the first innings now, and should look to score runs here, anything below 150, you know, the kind of batting young star Reban possess. They will take the chances to take that score, to chase down the score.
Tajammul, but one of the best batter, and he has shown that character today. He has shown a brilliant glimpses of batting today. Has been a blazing innings, and rest of the batters have failed to score runs on this wicket or to give that support to Tajammul. With Imran Magre and Irfan Yusuf and Tahir Tariq, the part of live broadcast. You're watching it on Facebook, Global News Network, and YouTube's JK Sports Discovery. Enjoy the live broadcast, the finals of Village Level Cup Reban, as the lefty batter arrives at the crease. A direct hit could have made things very interesting there, as Tajammul was interested in stealing a quick single. He got a single, and he will be on strike. 3 more bowlers left in this over. And Jahangir Lun with Parraypora. Thank you very much, brother, for your love and support. It really means a lot for this appreciation. We thank you millions of times. Jahangir Lun, star batter, is Tajammul Butt, and then you have Khazir Mohammed watching as well. And Tajammul lifts this in the air. This could be trouble for him, a chance, and it goes down. That deep scare leg fielder, he was never in control, he was never in position. I guess those sun rays falling directly on his eyes, and he got both hands to the ball, but at the last moment he spills that one down, and Tajammul gets the life here. Both the batters steal a run, couple of runs here, and how costly this drop is going to be. And Tajammul given the reprieve. Have 2 more deliveries left. His Emre figures again. Down the track goes Tajammul, and that's a standard deliver stuff. Back over the bowler's head. That's what we call it, rubbing salt to the injuries of the bowler. The drop of the previous ball, and now this one disappears into the stands for 4. Should have been taken the previous catch, and that could have made a difference of 20 odd runs in this game. And they got the wicket of Tajammul, but now this one, Tajammul leaves the crease, comes down the track and takes the ball on the full, goes up and over the bowler's head. And long gone, had no chance. He just watches the ball as it went like a tracer bullet down to the boundary for 4. 126 for the loss of 7. The final ball, and Tajammul just chips it in the air, although a lack of timing onto that. It hits the splice of the bat, rolls down to mid-on. The bowler on his own fielders the ball. 17 done. As NCC Green Nowpora look to accelerate. NCC Green Nowpora looking, to take on the bowlers, to take on that attack, so that you can get the kind of a score on board where you feel a bit comfortability. And 127 for the loss of 7 it is. We have 3 more overs left now. And what is cooking in the mind of NCC Green Nowpora? What do they think is going to be enough score on this board where the bowlers can bowl upon? At least above 150 they should be trying on. 3 more overs to go. They gone to Mudassir. He bowled in the power play, was bowling excellent, was bowling exceedingly well. He's got the ball in the death overs, over number 18, and 3 overs 1 for 24, the economy of 8. Tajammul batting on 77. We witnessed a century in the first game. Are we going to witness one more here off the bat of Tajammul? First ball as he drags the ball to the mid wicket, and they get a single. 128. Tajammul moves on to 79. See, out of those 128 runs, at least 70% of the scoring is done by this man, and he has been the backbone today. I guess he has been the driving force of NCC Green Nowpora. Has been excellent with the bat, taking the responsibility on the shoulders, that burden, and carrying his team along. And once again, that is a big shot. That's a huge 6. Thought that he hasn't timed the ball well, but it's Bilal lefty sending the ball soaring into the stands for a 6. Wonderful strike, and that should do the job for the batting side, and that should ease some nerves in the dugout as well. At one point of time I thought that it has come off the lower part of the bat, that Q end of the bat, but still manages to get it over those ropes and into the stands. Half a dozen it is. Next ball to Bilal, outside off stump, that should be a wide, and 1 more run to the score takes them to 135 for the loss of 7. 16 bowlers left now in this first innings,
And Tully will look to get up to 150, 160 now. Out of those 16 balls, if they can score 30 odd runs, that will be a good score, a fighting total. Next ball, and Bilal tries to work it on the onside. He gets a top edge, and it flies to the third man boundary for 4. He was trying to work it on the onside, go leg side, but the ball got big on him, and he gets the top edge, flies over wicketkeeper and third man as they watch the ball go past by and down to the boundary. So a good over in terms of runs. 3 bowlers, 12 runs coming off this over, and Mudassir in his final over proving to be expensive stuff, and giving NCC Green Nowpora a slight sniff, a slight chance to be back into the contest, to make their way back. As Mudassir goes again outside off, will have to re-bowl. It's a wide. It is a wide delivery. And Bashir Ahmed War once again providing that information. Rama Blasters are on fire again. The second game today, and after 8 overs they have scored 139 runs. For me, that is absolute madness. That is crazy with the bat. 8 overs 139, and today they set a record total here in the morning final, scoring 307 runs in 8 overs, in 20 overs. Next ball to Bilal, and he cuts it away. Wonderful shot down to the point boundary for 4. That is wonderfully timed, but wide outside off stump. Pressure on Mudassir, but just leaking runs in this over. And let's take a look. He has conceded 17 runs so far of 4 bowlers, and this over has really brought NCC Green Nowpora in the game, and well within that grasp they can score a big score from here on. 2 more to go in over number 18. Bilal lefty is doing the damage, and again right in the block hole, and he has his eyes on the ball, nicely pushes it back to the bowler, somehow manages to keep that one away. We got a final ball of over number 18, but Mudassir has already been expensive in this one. 17 runs. This over has costed them arms and legs here, and has given a bit sniff to the batting side to come back, and once again tries to swing it away up in the air, and the fielder tried his level best to catch the ball, but to no avail. It runs away to the boundary. 21 coming off this over, and somehow Mudassir has finished this one as well. It's 148 for the loss of 7 after 18. शुक्रिया फिरदौस। 18 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और मजमूई स्कोर है एनसीसी ग्रीन नौपोरा का 18 ओवर्स के बाद 148, 7 विकेटों के नुकसान पर। अब पारी के मजीद 2 ओवर्स आना बाकी है। इस दौरान बशीर अहमद वार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और इसके अलावा खजर मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हैं, खजर मोहम्मद के साथ जहांगीर लोन हमारे साथ जुड़े हैं, और इनके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं पराजीएम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खजर मोहम्मद, इमरान मागरे हमारे साथ जुड़े हैं, इरफान यूसुफ और ताहिर तारिक भी हमारे साथ जुड़े हैं। इरफान यूसुफ के साथ जहांगीर लोन भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खजर मोहम्मद भी हमारे साथ जुड़े हैं, और अब खजर मोहम्मद जो है कुछ लिख रहे हैं। सैयार वार भी हमारे साथ जुड़े हैं। 19वें ओवर की पहली गेंद तजम्मुल बट के लिए, गेंद को खेल दिया 6 रन के लिए, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। तजम्मुल बट के बल्ले से आने वाला एक और छक्का, और उनका इनफरादी स्कोर हो चुका है 84, जबकि मजमूई स्कोर 154। 154 मजमूई स्कोर, 84 रन बनाए तजम्मुल बट ने। तजम्मुल बट इस वक्त लाजवाब बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 52 गेंदों का सामना किया, 84 रन बनाए, मजमूई स्कोर 154, 7 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद ओवर विकेट, कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस पे लिया और गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की जाने। फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस दौरान सिर्फ 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। ये 19वें ओवर का खेल जारी है, और मोहम्मद एम रफी जो है वो बॉलिंग मार्क पर 13 गेंदों पर 36 रन की शराकतदारी हुई है बिलाल लेफ्टी और तजम्मुल बट के माबैन। बिलाल लेफ्टी 7 गेंदों का सामना किया, 19 रन बनाए। अब सामना करेंगे एम रफी की गेंद का। एम रफी ओवर में तीसरी गेंद के साथ 19वें ओवर का खेल जारी है।
गेंद को खेल दिया ऑन साइड की जाने, फील्डर के पीछे मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, सिर्फ 1 रन मिलेगा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 156। 19वें ओवर का खेल जारी है, 156 मजमूई स्कोर। मुश्ताक ऋषि लिख रहे हैं 190 जाएगा। ये मुश्ताक नाइको भी जुड़े हैं और डार ताहिर भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनके साथ साथ डार मुदस्सिर और सैयार वार भी हमारे साथ जुड़े हैं। मुश्ताक ऋषि लिख रहे हैं 190 तक टारगेट जा सकता है। अब एम रफी अगली गेंद के साथ तजम्मुल बट के लिए, गेंद की विकेटें छोड़कर गेंद को खेला, बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक, हालांकि फील्डर आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से आए फारूक अहमद, और इस दौरान दोनों बल्लेबाज ने इस दौरान जोरदार अपील और आउट। तजम्मुल बट रन आउट होकर पवलैन वापस जाते हुए ये यहाँ पे पारी इख्तिताम को पहुंची। तजम्मुल बट की आपको रिप्ले में जरूर दिखाना चाहूंगा, पीछे रहे और लाइटली लिया, कहा जाएगा कि यहाँ पे हल्के में लिया और डायरेक्ट हिट सीधे स्टंप्स को छू गई, तो तजम्मुल बट की इनिंग का खात्मा होता हुआ। तजम्मुल बट एक लाजवाब पारी 85 रन की, बल्कि 86 रन की खेलने के बाद जो है आउट हुए। 157 7 विकेटों के नुकसान पर मजमूई स्कोर है। 157 7 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर का खेल जारी है। इस ओवर में अभी 2 गेंदों का आना बाकी, कुल मिलाकर इस मैच में, इस पहली पारी में 8 गेंदों का आना बाकी है। 157 है मजमूई स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर। तजम्मुल बट के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज कौन सा आए हैं देखना होगा, अभी तक उनका नाम अपडेट नहीं हुआ है, हालांकि 8 विकेटें गिर चुकी है 156 के मजमूई स्कोर पर। 156 के मजमूई स्कोर पर 8 विकेटें गिर चुकी है। 156 मजमूई स्कोर। बाएं हाथ के बल्लेबाज बिलाल लेफ्टी जो है वो सामना करेंगे यहां पर मोहम्मद रफी की गेंद का। 85 7 विकेटों के नुकसान पर और नए बल्लेबाज पेवलियन से नमदार होते हुए। इसी बीच मोहम्मद रफी, एम रफी की गेंद हवा में, शॉट तजम्मुल यहां पर जो है बिलाल लेफ्टी के लिए, और गेंद आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री लाइन को छूती हुई 4 रन के लिए। इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 161 हो चुका है। खजर मोहम्मद हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नसीर बट भी हमारे साथ जुड़े हैं, बट इजाज भी हमारे साथ जुड़े हैं, और इनके साथ साथ खजर मोहम्मद लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। एक और बड़ा स्ट्रोक, और इस मरतबा जो यहाँ पर खेल दिया है और स्क्वायर लेग बाउंड्री की जानिब 4 रन के लिए, और इन 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 164 हो चुका है 8 विकेटों के नुकसान पर। 164 मजमूई स्कोर। 164 8 विकेटों के नुकसान पर बिलाल लेफ्टी और जहांगीर अहमद वानी इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। जहांगीर वानी जो है वो स्ट्राइक पर होंगे, और यहां गेंदबाज है तो यहां जो है सुहेल को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। 164 8 विकेटों के नुकसान पर आखिरी ओवर का खेल अब शुरू होने को है। आखिरी ओवर, और जहांगीर वानी सामना करेंगे इस ओवर में पहली गेंद का। गेंद की ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 1 इजाफी रन के साथ 165। शाहिद यत्तू और जहांगीर लोन हमारे साथ जुड़े हैं, खजर मोहम्मद भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली गेंद लेफ्ट ऑफ स्टंप से बाहर, एक मरतबा फिर वाइड बॉल का इशारा, एक मरतबा फिर वाइड बॉल का इशारा, हालांकि अंपायर के फैसले से नाखुश दिखाई दे रहे हैं विकेट कीपर और गेंदबाज, लेकिन अंपायर का फैसला हतमी और आखिरी, और वाइड बॉल का इशारा। सोहेल एक मरतबा फिर ओवर में अगली गेंद के साथ। 166 8 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर का खेल जारी है। पहली गेंद के साथ एक मरतबा फिर सामने है जहांगीर वानी, गेंद की ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर, इस मरतबा भी वाइड। लगातार 3
वाइड गेंदें फेंक चुके हैं इस ओवर में। अभी तक कोई लीगल गेंद फेंकने में कामयाब नहीं हुए सोहेल। 167 हो चुका है मजमूई स्कोर। सोहेल ओवर में अगली गेंद के साथ, ये ओवर की पहली गेंद होगी, आखिरी ओवर पहली पारी का। गेंद की एक मतबा फिर इस मतबा जो है ऑफ स्टंप से थोड़ी बहुत बाहर की जानिब, और यहां अंपायर की जानिब से कोई इशारा नहीं। सोहेल अगली गेंद, और गेंद को खेल दिया है, फील्डर रोकने में नाकाम और गेंद बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। ये चौका आता हुआ जहांगीर अहमद वानी के बल्ले से स्कोर बढ़ता हुआ 171। अभी भी कुल मिलाकर 4 गेंदों का आना बाकी। डार हमीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डार हमीद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शाहिद यतू भी हमारे साथ जुड़े हैं, खजर मोहम्मद लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या बिलाल लेफ्टी को स्ट्राइक मिलेगी? जहांगीर वानी अगली गेंद का सामना करेंगे, ऑप्शन से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, वाइड बॉल का इशारा, और स्कोर बढ़ता हुआ 172। 8 विकेटों के नुकसान पर लंबा ओवर जाता हुआ सोहेल का, और कुल मिलाकर इस ओवर में सिर्फ अभी तक 2 गेंदें फेंकी है सोहेल ने। 4 वाइड गेंदें। इस दौरान बड़ा स्ट्रोक, अच्छा खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन फील्डर पीछे मौजूद आमिर हुसैन, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन मुकम्मल किया। बिलाल लेफ्टी अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। सिर्फ 3 गेंदों का खेल इस पहली पारी में बाकी। 173 मजमूई स्कोर, 8 विकेटों के नुकसान पर अब नवपुरा एनसीसी ग्रीन का 3 गेंदों का खेल बाकी। बिलाल लेफ्टी स्ट्राइक पर 10 गेंदों का सामना किया और 28 रन बनाए बिलाल लेफ्टी ने। उवैस अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, उमर नाइकू जुड़े हैं, खजर मोहम्मद भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अब देखना होगा बिलाल लेफ्टी जो है वो कितना फ़ायदा उठाने में कामयाब होंगे इन आखिरी 3 गेंदों का, जो कि 3 गेंदें बची है। सोहेल बिलाल के लिए गेंद को खेल दिया है, फील्डर पीछे मौजूद, 1 रन मिला, क्या दूसरे रन के लिए चाहेंगे? दूसरे रन के लिए गए हैं और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ, तो 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 175। लेग बाई की सूरत में रन हासिल हुए हैं। अब आने वाली 2 गेंदें बाकी है इस पहली पारी में, सिर्फ 2 गेंदों का खेल बाकी, और सामना करेंगे इस ओवर की 5वीं गेंद का बिलाल लेफ्टी। बिलाल लेफ्टी ने 11 गेंदों का सामना किया, 30 रन बनाए, 175 मजमूई स्कोर एनसीसी ग्रीन का। फैसल डार बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। सोहेल की गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, दोबारा से गेंद को फेंकना होगा और लंबा ओवर जाता हुआ ये सोहेल का। फैसल इशफाक अहमद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 5वीं डॉट ये वाइड गेंद है, 5वीं वाइड गेंद, और कुल मिलाकर इस ओवर में अभी तक 10 गेंदें फेंक चुके हैं, जिनमें 4 लीगल गेंदें हैं। इस मरतबा बल्ले और गेंद के दरमियान सही कनेक्शन, और गेंद 6 रन के लिए सीधे पेविलियन में जाती हुई, और इन 6 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 182 हो चुका है। बिलाल लेफ्टी के बल्ले से आने वाला ये छक्का, 182 मजमूई स्कोर। अब यहां से कुल मिलाकर जो है आखिरी गेंद का आना बाकी, पहली पारी की आखिरी गेंद, और सामने है बिलाल लेफ्टी। 12 गेंदों का सामना किया, 36 रन बनाए, हवा में शॉट, उस और कोई फील्डर तैनात नहीं, 1 रन बना, दूसरे रन के लिए जाएंगे और वहां पर रन आउट, 1 रन का इजाफा, तो कुल मिलाकर 183 हो चुका है स्कोर। 184 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए यंगस्टर रेबन को, और जैसे ही दूसरी पारी का आगाज होगा हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत। हेलो, तो दोबारा से आप सब व्यूअर्स का खैर मकदम करना चाहेंगे। रन चेज में उतरी है यहाँ फाइनल मुकाबले में यंग स्टार रेबन की टीम, और 184 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। 184 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं, ज़रा देर बाद उनके नाम भी अपडेट होंगे, और ये ग्रीन पार्क परेपोरा विलेज लेवल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला, और इस फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए
एनसीसी ग्रीन नौपोरा ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए और 184 रन का हदफ मिला है मुकाबला जीतने के लिए। आमिर हुसैन और फारूक भट्ट आए हैं सलामी बल्लेबाजों के रूप में। आमिर हुसैन नॉन स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक एंड पर है फारूक भट्ट, जबकि बिलाल लेफ्टी जो है वो बॉलिंग मार्क पर होंगे। बिलाल लेफ्टी बॉलिंग मार्क पर और दूसरी पारी की पहली गेंद के साथ सामना करेंगे उनकी गेंद का आमिर हुसैन। बिलाल लेफ्टी बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार, ये दूसरी पारी की पहली गेंद के साथ, और सामना करेंगे उनकी गेंद का आमिर हुसैन। आमिर हुसैन जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं यंगस्टर रेबन की जानिब से, उनका साथ निभाने के लिए नॉन स्ट्राइक एंड पर है फारूक भट्ट। तो देखना होगा किस तरह का आगाज फराम होगा यंगस्टर रेबन को, और अगर एक अच्छा आगाज फराम होगा तो यकीनन फिर टीम का जो मोराल है जो वो बूस्ट हो जाएगा। अगली ये पहली गेंद दूसरी पारी के बाएं हाथ के गेंदबाज बिलाल लेफ्टी के, और जड़ में फेंकी हुई गेंद बल्ले का निचला हिस्सा लेती हुई गेंद गई पॉइंट की जानिब। गेंदबाज खुद गए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। आप तक हमारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, इस हवाले से हमें जरूर जानकारी दीजिएगा जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बिलाल लेफ्टी बॉलिंग मार्क की जानिब वापस जाते हुए बिलाल लेफ्टी सामना करेंगे आमिर हुसैन। आमिर हुसैन के लिए बिलाल लेफ्टी ओवर में दूसरी गेंद के साथ बैक फुट पर गेंद को खेला और रन के लिए दौड़ पड़े हैं। यहां रन मुकम्मल होता हुआ, हालांकि नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो आया था लेकिन काफी स्लो, और रन मुकम्मल होता हुआ पहला रन आता हुआ यंगस्टर रेबन के लिए, और खाता खुलता हुआ यंगस्टर रेबन का एक बिना किसी नुकसान के पहले ओवर का खेल जारी। एक मजमुई स्कोर। शौकत भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बिलाल भट्ट बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे यंगस्टर रेबन की जानिब से अब फारूक भट्ट। बिलाल लेफ्टी बॉलिंग मार्क पर। बिलाल लेफ्टी ने हालांकि बल्लेबाजी में 13 गेंदों पर 37 रन बनाए, एक अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए। फारूक भट्ट यहां सामना करेंगे पहली मर्तबा उनके लिए इस मुकाबले में बिलाल लेफ्टी हमसे दूर भागते हुए अंपायर को क्रॉस किया गेंद के फारूक भट्ट के लिए, बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को खेला हल्के हाथों के साथ, अपने फॉलो थ्रू से आगे गए बिलाल लेफ्टी और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक मजमुई स्कोर, पहले ओवर का खेल जारी। 184 रन चाहिए यह फाइनल मुकाबला जीतने के लिए यंगस्टर रेबन की टीम को। बल्ला अपना तब्दील किया वहां पर आमिर हुसैन ने, और डगआउट से उनके लिए बल्ला आया है। अब देखना होगा यह बल्ला उनके लिए कैसा निकलेगा। यंगस्टर रेबन की टीम रन चेज में 184 रन चाहिए एनसीसी नौपुरा ग्रीन के खिलाफ। इसी बीच बिलाल लेफ्टी, अगली गेंद फारूक के लिए अच्छी गेंद, विकेट में आती हुई गेंद को विकेट कवर करके खेला वापस बॉलर की जानिब। रन बनाने का कोई मौका नहीं। एनसीसी ग्रीन की जानिब से टॉप स्कोरर रहे तजमुल भट्ट जो रन आउट हुए 86 रन बनाकर। बिलाल लेफ्टी ओवर में पांचवी गेंद के साथ 1 रन आया है, और पांचवी गेंद फारूक भट्ट के लिए। बिलाल लेफ्टी की गेंद की बोल्ड कर दिया है, जारहाना अंदाज से खेलने की कोशिश, गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद सीधे स्टंप्स को छू गई। तो पहली विकेट गिरते हुए फारूक भट्ट के रूप में बोल्ड, साफ बोल्ड हुए फारूक भट्ट। महराज बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। पूरा से हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो क्वालिटी के हवाले से बहुत बहुत शुक्रिया। और पहले ओवर का खेल मुकम्मल। पहले ही ओवर में यंगस्टर रेबन को जो है यहां पे नुकसान उठाना पड़ा। फारूक भट्ट बिना खाता खोले पेवेलियन वापस गए। पहली विकेट फारूक भट्ट के रूप में बिना खाता खोले पेवेलियन वापस गए। 2 गेंदों का सामना किया। अब राशिद रसूल नए बल्लेबाज पेवेलियन से नमदार होते हुए टीम के कप्तान भी है, और उनके कांधों पे जिम्मेदारी देखना होगा। राशिद रसूल जो है वो यहां पर किस तरह की बल्लेबाजी का मुजाहरा करेंगे। बिलाल लेफ्टी ओवर में आखिरी गेंद के साथ सामना करेंगे उनकी गेंद का दाएं हाथ के बल्लेबाज राशिद रसूल जो कि अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी के लिए।
एनसीसी ग्रीन नवपुरा, जिन्हें विकेट जरूरत थी और पहले ही ओवर में विकेट दिलाई बिलाल लेफ्टी ने। फारूक बट बिना खाता खोले पवेलियन वापस गए, पहली विकेट गिरी एक मजमूई स्कोर पर यहां पर यंगस्टर रेबन की। महराज तरकपुरा से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अब राशिद रसूल ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे। राशिद रसूल बिल्कुल तैयार गेंद का सामना करने के लिए, गेंद को खेला हवा में, शॉट लेकिन महफूज, पीछे फील्डर और 1 रन मिलेगा। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर 2। पहले ओवर का खेल मुकम्मल, पहले ओवर का खेल मुकम्मल और 2 मजमूई स्कोर। बिलाल लेफ्टी का ओवर मुकम्मल जिसमें उन्होंने विकेट हासिल की फारूक बट के रूप में। A wicket in the very first over while they're chasing 183, although it will test the ability of the batters to chase down this score. No doubt it's a big score to chase at the start of the innings. You'll have to go at least 9 runs per over, and Farooq Butt is already back into the pavilion, and I could say that Bilal Lefty is doing everything right today. Played a game-changing cameo at the death of the innings. Of just 13 balls, he smashed 37 unbeaten runs, and now in the very first over he has got rid of Farooq Butt by knocking him over, by knocking his stumps over, and he has conceded just 2 runs. They're going to call it to bowl, and he is just warming up, getting ready to bowl from the com box, and Rashid Rasool and Amir Hassan are there to bat for youngster Reban, and to lift to the title of village level Parraypora at 2025. You'll have to chase 184 runs in their allotted quota of 20 overs, but as far as batting is concerned, not the kind of start they would have asked it for, they would have liked it for, as the wicket in the very first over. A coordinate offside fielder for Khalid. First ball off his spell to Rashid. Right on the money, good length delivery, as Rashid just pushes forward with soft hands and scampers through for a quick single. 3 for the loss of 1. With that, Rashid moves on to 2. Amir is batting on 1. It was a second ball duck for Farooq today, as he was clean bowled by Bilal Lefty. So Bilal turning things on his head today, his experience coming into play. But the Tajammul's innings was the main difference in the game. He was playing that solo show with the bat, and he goes across the line on the onside. The ball is trickling away down to the fence for 4. Although he didn't time it well, Amir Hassan, he came off the inside half of the bat, still manages to get that one over that infield, and couple of bounces into the fence for 4. 7 for the loss of 1. I told you 183, that's going to test the batting side of youngster Reban. That's going to test their ability of chasing down the score, and he lost a wicket in the very first over, but Amir and Rashid will take those responsibilities, will try to take the team, and this one is a good delivery. You see a bit of bounce onto that as Amir Hassan rides that one nicely, and a gentle push on the offside straight to the backward point region. There is a fielder inside the ring. We're talking about the batting in the first innings, as they kept losing wickets, but at the other end Tajammul was playing one heck of an innings, and he somehow managed to get his team out of those tough situations, and they lost 4 or 5 wickets quickly, and he was playing a lone hand, and he was batting like a warrior, and he was given a much needed company at the end by Bilal Lefty. He played a fiery cameo which helped the team to go up to 183. At one stage, after 16 overs, the score on board was 116 for 6. The last 6 overs, last 4 overs, conceded more than 60 runs, which has helped their cause. And he hits it on the onside as he got the gap, thinks so, and it runs away down to the boundary for 4. Second boundary of the over for Amir Hassan, and he moves on to 9 of 6 deliveries. After 1.5 overs, it's 11 for the loss of 1. Now into the double digits, just Khalid pushes the ball further up to the batter, and Amir swings leg side. Just one fielder at mid wicket, and the rest of the area is pretty vacant, and easy pickings for the batter. He gets it down to the boundary for 4. 11 for the loss of 1. The final ball of over number 2, Khalid to Amir, and he punches it off the back foot straight to the fielder, where Bilal Lefty fielding inside the ring, and there is no chance of a run. Denies him a single. 2 overs gone,
and youngster Reban in chase of 184-11 for the loss of 1, with Khalid conceding 9 runs in the first over, a couple of boundaries off the bat of Amir Hussain, who is batting on 9. But in the first innings it was Amir Hussain's wonderful spell which definitely restricted the batting side of NCC Nowpora under 200. Otherwise they were well and truly on course to score that. Zubair Tantre in the meantime is the part of live broadcast. It will be the third over of the chase. Wicketkeeper up to the stumps, back slip in place, third man backward point as well. First ball, it's a top edge, Skyer, and put down by the fielder. Rashid gets the life, the short third man fielder. He rose up to the ball even though he got both hands straight, and he spills the catch down, and Rashid Rasool gets the life. The first ball of the fresh over, he was trying to go onside for a big shot, and he gets a big top edge. It flies up in the air. Although they had a fielder at short third man, he went to the ball, got both hands, but was never in position to take the catch. At this level will go down as a dot, and Rashid gets the live, takes the score to 13 for the loss of 1. 171 to get his way in over number 3. Bilal trying to create that angle, bowling round the stumps. Fuller in leg delivery, and Rashid heaves leg side. No timing onto that, but still manages to get it down to the boundary for 4. It came off the inside off the bat, an inside edge. He was eyeing that mid wicket, that cow corner area, and he gets an inside edge, and he manages to find the gap. He manages to thread the gap on the onside, and the outfield towards that region is quite fast as the ball runs away to the fence for 4. With that boundary, score moves on to 17 for the loss of 1. A wicket of Farooq in the very first over by Bilal lefty has conceded 8 runs so far. As I told you, he is trying to create that angle, bowling round the stumps to Rashid, and next ball, that's right on the money as Rashid late cuts the ball but finds his fielder inside the ring at point. There is no chance of a run. It's the third over of the chase in progress. 17 for the loss of 1. Has been a bit of runner ball chase until now, but they need more than that at the start of the innings. The asking rate is 9.12, so you'll have to keep eyes on the required run rate as well. You'll have to score those runs in the power play. And next ball to Rashid, a bit slower, hold us a bit off the surface, and Rashid was early through to the shot, and finally he manages to push it down to extra cover. The fielder is inside the ring, no addition to the total. And Pirzada Zubair, thank you very much, mentioning that this wicket of Parraypora is full of runs. If you stay on the wicket, you could just make runs there. And absolutely right, you're spot on, and I'm on board with you. You know, in the first game, if you have watched that Rama Blasters today, shattered all the record books onto the pads. That is a wonderful shot, flicked away to the scallop fence for 4. That was on the pads and asking for trouble, and Rashid just whips him across the line in the gap and down to the scallop boundary for 4. And Rashid Latif is mentioning that it's raining heavily here in Kupwara, and after 2.5 overs, youngster Reban at 21 for the loss of 1. 2 boundaries in the previous over, 2 in this one, and that will keep youngster Reban going. As I told you, you need 9 runs at the start of the innings, and you'll have to think of those 9, at least one big shot in each and every over. And the final ball of over number 3 coming up. Rashid with those 2 boundaries now into the double digits. He moves on to 12. He'll be facing the final ball as Bilal lefty is just having his fielders at their respective positions with the final ball. Round the stumps he goes, down the ground he goes, hit hard. But Tajammul is there, he tidies things up. Good effort in the field as he keeps the batters down to 1 only. But there was a wonderful strike, hit hard, absolutely hard. But Tajammul covering the good ground, a single of the final ball to retain the strike for the next over. 3 gone as youngster Reban in chase of 184-22 for the loss of 1. शुक्रिया फिरदौस। 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। मजमूई स्कोर है 22, 1 विकेट के नुकसान पर। राशिद रसूल 13 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि आमिर हुसैन ने 7 गेंदों का सामना करते हुए 9 रन बनाए। 184 रन का हदफ मिला है मुकाबला जीतने के लिए। जहांगीर लोन हमारे साथ जुड़े हैं।
मीर बुशरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद लतीफ़ कुपवारा से और लिख रहे हैं कि कुपवारा में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। जुबैर तांतरे जुड़े हैं और इनके साथ साथ जियान हमारे साथ जुड़े हैं महराज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब व्यूवर्स का जुड़ने के लिए। 22 मजमूई स्कोर यंगस्टर रेबन का रन चेज में 1 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। खालिद को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर, खालिद बॉलिंग मार्क पर और सामने है उनके राशिद रसूल जिन्होंने 8 गेंदों का सामना करते हुए 13 रन बनाए 3 चौकों की मदद से। गेंद को खेल दिया लेकिन फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, पॉइंट पर रन बनाने का कोई मौका नहीं। खालिद आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग मार्क की जाने वापस जाते हुए 184 रन का हदफ मिला है मुकाबला जीतने के लिए यहाँ पर यंगस्टर रेबन की टीम को एनसीसी ग्रीन नोपोरा की जानिब से। खालिद राशिद रसूल के लिए ओवर में दूसरी गेंद के साथ चौथे ओवर का खेल जारी और गेंद को तिरछे बल्ले के साथ निकाल दिया। वहां हल्की सी मिस फील्डिंग और उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर रन मुकम्मल किया। 1 रन का मजीद इजाफा स्कोर में 23 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। और बट मुश्ताक मुशी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डार गवहर और जहांगीर लोन भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर मजमूई स्कोर है 23, 1 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल जारी। खालिद अपना पहला ओवर फेंक रहे हैं, बल्कि दूसरा ओवर, और अब राशिद रसूल के लिए गेंद की बैक फुट पर उछाल लेती हुई गेंद हल्के हाथों के साथ गेंद को खेला, बल्कि आमिर हुसैन थे बल्लेबाज और रन बनाने का कोई मौका नहीं। आमिर हुसैन 9 गेंदों का सामना किया, 9 रन बनाए, 23 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल जारी है। अभी भी 161 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, जबकि कुल मिलाकर इस ओवर के बाद 16 ओवर्स का आना बाकी। राशिद रसूल गए अपने साथी बल्लेबाज के लिए कुछ सलाह मशवरा और खालिद एनसीसी ग्रीन की जानिब से अब एक मरतबा फिर ओवर में चौथी गेंद के साथ। खालिद आमिर हुसैन के लिए अंपायर को क्रॉस किया गेंद की और गेंद को ऑन साइड की तरफ खेला, हवा में शॉट लेकिन महफूज और गेंद सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री को छूती हुई 4 रन के लिए। आमिर हुसैन के बल्ले से आने वाला ये चौका और इन 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यंगस्टर रेबन का 27 हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। आमिर हुसैन 13 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 9 गेंदों का सामना किया। राशिद रसूल 14 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 10 गेंदों का सामना करते हुए। 27 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर यह मुकाबला यंगस्टर रेबन और एनसीसी ग्रीन के माबैन यहां परेपोरा के स्पोर्ट्स फील्ड पर फाइनल मुकाबला विलेज लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट का। गेंद की इस मतलब ऑन साइड की तरफ एक और अच्छा स्ट्रोक, फील्डर गेंद के पीछे लेकिन गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से तेज और गेंद बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। आमिर हुसैन के बल्ले से आने वाला एक और चौका और इन 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 हो चुका है यंगस्टर रेबन का। कुल मिलाकर चौथे ओवर का खेल जारी। 17 रन पर पहुंच चुके हैं आमिर हुसैन। एक मरतबा फिर खालिद की गेंद का सामना करेंगे। खालिद ओवर में आखिरी गेंद के साथ, इस ओवर से अभी तक 9 रन आए हैं 5 गेंदों पर। गेंद को खेला, हवा में शॉट, देखना होगा फील्डर गेंद के पीछे 1 रन बना, दूसरे रन के लिए गए हैं और इस दौरान गेंद की रफ्तार कम हुई, 2 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन के इजाफे के साथ 33 हो चुका है स्कोर। ओवर मुकम्मल होता हुआ 5 ओवर्स के इख्तिताम पर 4 ओवर्स के इख्तिताम पर मजमूई स्कोर है 33 1 विकेट के नुकसान पर। बट मुशी, डार गवहर, जहांगीर लोन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइव नशरियात में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देखना होगा एनसीसी ग्रीन की जानिब से किस गेंदबाज को बुलाया जाएगा बॉलिंग मार्क पर। और 33 मजमूई स्कोर हो चुका है, 32 रन की शराकतदारी हुई है राशिद रसूल और आमिर हुसैन के दरमियान। आमिर हुसैन ने 19 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया। राशिद रसूल ने 14 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया। बट मुशी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं नवपुरा से जहांगीर लोन। अब बिलाल लेफ्टी को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। 19 गेंदों पर 32 रन की शराकतदारी हुई है आमिर हुसैन और राशिद रसूल के दरमियान।
बिलाल लेफ्टी को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। बिलाल लेफ्टी अपना तीसरा और पारी का 5वां ओवर फेंकेंगे। सामना करेंगे उनकी गेंद का राशिद रसूल। 10 गेंदों का सामना करते हुए राशिद रसूल ने 14 रन बनाए हैं। राशिद रसूल बिल्कुल तैयार गेंद का सामना करने के लिए। बाएं हाथ के गेंदबाज बिलाल लेफ्टी गेंद की राशिद रसूल के लिए गेंद को खेला, बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक और गेंद सीधे 4 रन के लिए। हालांकि मिडॉन के फील्डर को जो है लॉन्ग ऑन से अंदर बुलाया गया था और इस दौरान बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक राशिद रसूल के बल्ले से 4 रन के लिए। हमारे साथ गुलाम नबी डार जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जहांगीर लोन भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। स्कोर बढ़ता हुआ 37, 1 विकेट के नुकसान पर। राशिद अब राउंड द विकेट उनके लिए गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ के गेंदबाज बिलाल लेफ्टी राउंड द विकेट। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की अच्छी गेंद, विकेट में आती हुई गेंद हल्के हाथों के साथ यहां पे यस नो, लेकिन रन मुकम्मल होता हुआ। अब रन जो है मुकम्मल होता हुआ और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38, 1 विकेट के नुकसान पर। बिलाल लेफ्टी आहिस्ता आहिस्ता बॉलिंग मार्क की जानिब वापस जाते हुए। जहांगीर लोन, गुलाम नबी डार हमारे साथ जुड़े हैं मराजी गुंड रफियाबाद से, और डार गवहर भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बशीर अहमद वार भी हमारे साथ जुड़े हैं। रहमा ब्लास्टर्स ने 18 ओवर्स में 261 रन बनाए हैं। अगली गेंद और इस मतबा बल्ले का अंदरूनी किनारा और सीधे स्टंप्स को छू गई, तो इस तरह से बोल्ड हुए हैं यहां पर आमिर हुसैन। आमिर हुसैन आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए। यह दूसरी विकेट गिरी और लेग स्टंप को गेंद छू गई, तो दूसरी विकेट गिरती हुई 38 के मजमूई स्कोर पर यंगस्टर रेबन की 5वें ओवर का खेल जारी और बिलाल लेफ्टी के खाते में जाने वाली ये दूसरी विकेट। नए बल्लेबाज पेवेलियन से नुमदार होते हुए, उनका नाम अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। हालांकि बिलाल लेफ्टी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए अभी तक अपनी टीम के लिए 2 विकेटें हासिल की। जो 2 विकेटें गिरी है वो बिलाल लेफ्टी के खाते में गई। 2368 रन है इरफान के पास, जो नए बल्लेबाज आए हैं। साथ निभाएंगे जहांगीर राशिद रसूल का और सामना करेंगे बिलाल लेफ्टी के ओवर की चौथी गेंद का। बिलाल लेफ्टी ओवर में चौथी गेंद के साथ। रियान डार वॉचिंग फ्रॉम डिलाइट सॉफ्टी कॉर्नर नवपुरा से। फैसल शब्बीर हमारे रेगुलर व्यूअर और ट्रेड प्रेसिडेंट रहमा बशीर अहमद वार भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आमिर हुसैन की विकेट यहां पे गिरी है। आहिस्ता आहिस्ता पेवेलियन वापस जाते हुए आमिर हुसैन, और इस दौरान जो है 2 विकेटें गिरी है 38 के मजमूई स्कोर पर। नए बल्लेबाज इरफान आए हैं, साथ निभाएंगे कप्तान राशिद रसूल का और सामना करेंगे बिलाल लेफ्टी की गेंद का। क्या एनसीसी ग्रीन 184 रन का जो है को बचाने में कामयाब होगी या फिर यंगस्टर रेबन के बल्लेबाज टारगेट हासिल करने में कामयाब होंगे? ये सभी कुछ खेल के साथ साथ। बिलाल लेफ्टी बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार, सामने है इरफान। 38 स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर। इरफान बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल, इरफान जो है सामना करेंगे बिलाल लेफ्टी के ओवर की चौथी गेंद का। ये 5वें ओवर का खेल जारी है। फील्ड रिस्ट्रिक्शन का 5वां ओवर, आखिरी ओवर इसके बाद फेंका जाए। बोल्ड कर दिया है, बोल्ड कर दिया है। पहले बड़े स्ट्रोक के लिए गए, उसके बाद बल्ला अपना रोका और गेंद बल्ले और पैर के दरमियान से होती हुई सीधे मिडल स्टंप को छू गई। एक और विकेट और आमिर आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए। तीसरी विकेट गिरी 38 के मजमूई स्कोर पर यहां यंगस्टर रेबन की, और यंगस्टर रेबन टीम पर दबाव और ज्यादा बढ़ता हुआ। और बशीर अहमद वार लिख रहे हैं कि रहमा ब्लास्टर्स ने आज हिस्ट्री क्रिएट की। यहां इस मैदान में 307 रन बनाए परेपुरा स्पोर्ट्स फील्ड पर अगेंस्ट राउचा। जी बिल्कुल। और गुलाम नबी डार साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। रफियाबाद प्रीमियर लीग से हमारे साथ कुछ दोस्त जुड़े हैं, लिख रहे हैं कि एंट्रीज आर इनवाइटेड फॉर रफियाबाद प्रीमियर लीग। हरी अप एंड कंफर्म योर एंट्रीज। कॉन्टैक्ट द गिवन नंबर्स। नंबर है
9149515124। दोबारा रिपीट करना चाहूंगा 9149515124। 38 3 विकेटों के नुकसान पर एनसीसी ग्रीन का ये यंगस्टर रेबन का स्कोर एनसीसी नौपुरा ग्रीन के खिलाफ। और नए बल्लेबाज आए हैं फरहान शाह है बल्कि। और साथ निभाएंगे राशिद रसूल का, सामना करेंगे बिलाल लेफ्टी की गेंद का। हैट्रिक वाली गेंद होगी। बिलाल लेफ्टी क्या हैट्रिक लेने में कामयाब होंगे? हैट्रिक वाली गेंद। और सामने है बल्लेबाज फरहान शाह। फरहान आए हैं नए बल्लेबाज। हैट्रिक पर है बिलाल लेफ्टी। बिलाल लेफ्टी 2.4 ओवर में बिलाल लेफ्टी ने 18 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की है। रेबन के जो 3 खिलाड़ी पवेलियन वापस गए वो तीनों खिलाड़ी बिलाल लेफ्टी के खाते में गए हैं। बिलाल लेफ्टी हैट्रिक पर है और सामने है नए बल्लेबाज फरहान शाह। क्या हैट्रिक लेने में कामयाब होंगे? देखना होगा। इसी बीच बिलाल लेफ्टी ओवर में अगली गेंद के साथ गेंद की बैट और पैड साथ मिलाते हुए जोरदार अपील और आउट करार दिया गया है। आउट करार दिया गया है। आपको थोड़ा सा स्लो मोशन में रिप्ले दिखाना चाहेंगे। और हैट्रिक लेने में कामयाब यहां पर बिलाल लेफ्टी एनसीसी नौपुरा ग्रीन के लिए। एनसीसी नौपुरा ग्रीन के लिए बिलाल लेफ्टी हैट्रिक लेने में कामयाब बिना किसी हिचकिचाहट के। अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की और चलता किया यहां पर बल्लेबाज को। हैट्रिक हासिल की है और 38 के स्कोर पर यह चौथी विकेट गिरी है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से यह विकेट गिरी यहां फरहान की। यह आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहेंगे। और तो यहां हैट्रिक हासिल। तो 38 के स्कोर पर यह चौथी विकेट गिरी है। हैट्रिक हासिल की है यहां गेंदबाज बिलाल लेफ्टी ने। मुश्ताक रसूल हमारे साथ जुड़े हैं, गुलाम नबी डार साहब जुड़े हैं और इनके साथ साथ बशीर अहमद वार। कांग्रेचुलेशंस बिलाल लेफ्टी के लिए। और बिलाल लेफ्टी ने यहां पर हैट्रिक हासिल की है। नए बल्लेबाज आए हैं साकिब बशीर आए हैं नए बल्लेबाज। साथ निभाएंगे राशिद रसूल का और सामना करेंगे बिलाल लेफ्टी के ओवर की आखिरी गेंद का। क्या ओवर यहां पर बिलाल लेफ्टी का गया है एनसीसी ग्रीन के लिए, जिसमें उन्होंने हैट्रिक हासिल की। और कुल मिलाकर जो 4 विकेटें गिरी है ये चारों विकेटें बिलाल लेफ्टी के खाते में गई है। बिलाल लेफ्टी इकलौते ऐसे गेंदबाज जिन्होंने ये 4 विकेटें हासिल की है। इस मुकाबले में 2.5 ओवर्स में 18 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की। ओवर में आखिरी गेंद के साथ साकिब बशीर के लिए अंपायर को क्रॉस किया, विकेटों पे पहुंचे, गेंद की बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को खेला, विकेटें कवर करके ओवर मुकम्मल। कामयाब ओवर बिलाल लेफ्टी का। 5 ओवर्स के बाद 38 मजमूई स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। विक्या होला ओ विक्या क्या करने अमन दुबई
funny. मुझे क्या कोई उसका बहुत प्राइस नहीं उसका बहुत प्राइस बस नहीं कहना ना मगर वीडियो क्या कोई चीज़ कोई नहीं था एक्चुअली जो कि स्पोर्ट्स टाइम नहीं सुनिए बस ये तो चिकन इसको बुला दो बात मगर सुनो दिखने जो कि स्पोर्ट्स टाइम है क्या ये है कि अगर बुद्धि के साथ करते हैं ना ये क्या होता है ये सीखने में सो दूर करते हैं Segunda, cara, não sei o que. E eu não estou jogando. Está com exemplo, pessoa. Isso agora vai, né? Mas não vai ver isso, cara. E lá não vai vir isso. Olha. Isso que assim, Põe umas vezes? Tipo, você dá uma nota, sabe?
So back after the Azan break as well, and youngster Reban are already 5 down, half of the side, back in the pavilion. And this chase is proving to be a tough road for them with 132 runs to get of 14.3 overs. It's over number 6 in progress, or the 7 in progress. Rashid Rasool is still there fighting it out, batting on 31. As Bilal lefty goes once again to Rashid Rasool onto the onside. Rashid goes off the back foot, turns it away to the square leg, overthrows, and it results in couple of runs. 2 more runs have been taken, and here's Abu Saad mentioning it's all over now with a couple of viewers watching us from the official handle of Rafiabad Premier League, which is being played at Zatan Sports Field. We're in over number 7 of the game, 54 for the loss of 4. Still a long way to go for youngster Reban. Still plenty of job left in this game, and as far as Rashid is concerned, he is playing a lone hand, but he isn't getting that support. He is not receiving that support from other end. As he's watching all the batters here at the other end, walking back to the pavilion as 5 down. Bilal goes again, and Rashid goes onside. Has he cleared the field? Yes! Just over the fielder. Oh, it was a matter of inches as the ball sails over the head of long on fielder who was trying to go for the catch. And half a dozen for Rashid Rasool. He moves on to 39 of 20. He is surely keeping the hopes alive. It was a wonderful strike, and somehow he gets it over the fielder for a 6. Next ball, and he gets it in the gap, and unlucky for a batter there. I thought this will go down to the boundary as the ball stopped on its own, and the batters in the meantime come back for 2. 7 overs gone. It's 62 for the loss of 5. Going nearly at 9 runs per over, with Rashid Rasool doing much of a scoring, 41 of 21. At least 75% runs has been scored by this man, as until he is there, youngster Reban believe that they can scale the target, they can go over the line. As long as he is there, the hopes are alive. And Jahangir Ahmed Wani will be back into the attack. Rashid Rasool and Junaid Butt out there batting and battling it out. And to talk about the weather conditions now, those dark clouds are just hovering above us, and the chances of rain might be so. And this has been driven, pushed on the offside, fielder inside the ring, and no addition to the total. But although this has been a wonderful environment, wonderful scenes here at the Green Park Sports Field of Parraypora, where the second final of the day is underway. Next ball beats him completely. Wonderful delivery as it skids off the surface, a bit of pace, and the batter was taken by surprise as the ball goes into the gloves of wicketkeeper. 62 for 5, need to provide that much needed strike to Rashid Rasool. As far as youngster Reban are concerned, they would hope that Rashid stays there. As a batter, Junaid Butt just rotate the strike, get those singles on, and he pushes it with soft hands on the offside. Again finds the fielder. Those dots are going to do the job for NCC Green Nowpora as well, because the dots would create that pressure on the batters. They will try to score runs, then thick and fast will try to go hard at the bowlers, and that's why they sniff a chance to get a wicket. As Jahangir goes again, good delivery, beautiful bowling this is. You see the ball just shades away, beats everyone there, and was very close to the nick and gone into the gloves of wicketkeeper. 62 for 5, it is in over number 8. 4 dots on the trot, pressure on Junaid. Over the stumps he goes. Next ball, and it's up in the air, but will fall in no man's land, will fall in no man's area. Khalid steaming in from Scarlac tries to go for the catch, but he was never going to make it, and in the meantime the batters cross for a single. 63 for 5 in over number 8, 121 to get, and we have 73 bowlers left as the required run rate is more than 10. The final ball, Rashid backs away, cuts that one nicely, the fielder behind the ball, and the batters thinking of a second, but they are happy with a single. 8 overs have been completed, and the score on board is 64 for the loss of 5, going at 8 runs per over. Now 12 more overs left to 119
120 runs to win, and to be precise, the asking rate to chase down the score has gone to 10 now. It's 10 runs per over, 5 wickets in hand. As I told you, until Rashid Rasool is there, they have that belief they can scale the target and carry the day and go over the line. But as far as Rashid is concerned, that if he stays there, he will keep the hopes of a young star Reban alive. Not out on 42 has been a wonderful knock out of those 64 runs. This man has scored 42. Rest of the batters have come to naught today, all washed up. And it was Bilal Lafty's staggering hat-trick today in the finals game. That is always a wonderful, always a special thing, special moment for a bowler, taking a hat-trick in a finals game. And that is where he has been able to break that momentum, that rhythm of the batting lineup. And he has been given a long run by the captain. And he will be bowling his final over on the trot. 3 overs before that, he has got 4 wickets as well. And if we talk about his batting, it was his game-changing innings. Those fireworks at the end of the innings, at the fag of the innings, where he helped his team at one point of time, thought that they could go up to 150, but it was his wonderful efforts with the bat. He helped NCC Green Nowpora to go up to 183. It was all his wonderful efforts. In the first ball of the fresh over, Rashid works it down to the mid-wicket region. Fielder is there. Call for 2, but they are just happy with a single. And Rashid isn't happy at all. The call was for 2, but the batters in the end are happy with a single. 65 for the loss of 5. His 9th over is underway. It's Faizan Naiku bowling his first over, and he's been introduced into the attack as he goes to Junaid. And Junaid swings and misses. Swing and a miss. Tries to swing it leg side and heave it leg side, and he gets beaten. All ends up. Need to bring Rashid on strike, need to provide him much strike so that he can take you closer to the target. And he's been there for 8 bowlers, has just scored 2. 1 run of 2 bowlers so far as Faizan goes again outside off. A chance there to free the arms, but he was never in control. The ball goes into the gloves of wicketkeeper Abu Saji, and Dar is continuously enjoying the game. Then we have couple of overs with Batim Tiaz and Qayyum Wani. They are just watching and enjoying the game. Next ball as he flat bats it and gets the quick single. Run out here. An absolute brain fade. There was never a run. He was steaming back, and wicketkeeper has whipped the bails off. Let's take a look at the replays. That will give us a quick angle. And the wicket goes down. It's wicket number 6. But very unfortunate for a ball, for a batter to be dismissed like this way. Thought that wicketkeeper wasn't able to dislodge his bails when the ball was in his hand. I guess the ball was already out of his hands, and then he disturbs the stumps with his glove there. Let's take a close look and look at Nasir. As Junaid was charging for a single, he never is. So a run out here, 66 for the loss of 5. Looks like a bit of controversial decision. And he looks like he has the ball in his hand. And wicket number 6 goes down. It's a wicket run out. Junaid has to take a long walk back. One more goes down, and youngster Reban sinking further. And a wicket run out. It came against the run-up play here. There's a couple of viewers mentioning it's a controversial decision. It was not out, but the umpire's decision is final. He gives it out even in the first innings when Riyaz, I guess he was batting, and Rashid Rasool appealed for that bowled, but the ball didn't hit the stumps, and that was given out on field. And that is where this time the umpire raises his finger and the batter has to take a
long walk back to the pavilion. Faizan goes to the new batter, and that should be a wide. It's way outside off stump, and he needs to re-bowl this one. It's 67 on board for the loss of 5 wickets. Loss of 6 though, and over number 9 is in progress. And at this stage, NCC Green Nowpora are driving the game nicely. They have got a good command over the game, the control over the game. As we watch Faizan Naiku once again, and it's Butt Shaheen who has just arrived at the crease, faces the next delivery and tries to flirt with that. Loud shout off, caught behind, and up goes the finger. He was going chasing that delivery, and he gets the thinnest of the edges to the keeper. That's what we call edged and gone into the gloves of wicket keeper. It's wicket number 7 which has gone down, but rather that was a nothing shot from Butt Shaheen. Wide delivery, he goes chasing and he gets the outside edge and has been gathered well behind the stumps. 7th one goes down, and Rashid at the non-strikers, and he's on his knees. He knows that things aren't going good for youngster Reban here, with wickets falling one after the other, and it's Butt Shaheen who walks back on a golden duck. But that was a nothing shot, a loose shot, playing away from the body, chasing that wideish delivery, gets the edge, and see does the rest. It's a double strike in this over. Faizan Naiku proving to be a game changer now. Flirts with the wideish delivery and pays the price for it. Has to walk back. 7 down on 67. It's wicket number 7, and you see he's trying to run it down to the third man, playing away from the body. The wicket number 7 for NCC Green Nowpora. They are celebrating, and now they think they are very, very close to the victory. Sohail is the new man, and after the departure of Butt Shaheen, we have seen wickets falling in numbers here, and youngster Reban are paying a huge price. They were in the game even in the first innings as well. After 16 overs, the score was 116, but those last 4 overs, those death overs, has surely costed them a game, conceding 67. That's where NCC Green Nowpora got a momentum of the game, and then I can say in those final overs, when they come on to defend the score, they got wickets. And especially that special moment for Bilal Lefty for getting a hat-trick today in the finals game. That is why they broke the backbone of the batting unit, and are now almost on the cusp to register victory here and to lift to the title. The new batter is in. He got 2 more deliveries left in over number 9. Sohail to face. Run out of the previous ball. Before that, then a wide, then wicket again, caught by wicket keeper. Sohail to face as Faizan Naiku goes again outside off stump, driven nicely in the gap. But the fielder at the boundary, a single. It brings Rashid on strike. Now we'll have to wait how Rashid reacts, how he is going to approach to this chase. He knows he's losing the partners at the other end, and at any part of the innings he might be strangled at the non-strikers, and he might see that all 10 wickets have fallen. So he needs to go big and drive us back past the bowler down to long off. A single, and he will keep strike. He will retain the strike as well, as the stage of 9 overs have been bowled. 69 for the loss of 7 it is. Rashid playing the lone hand, 44 unbeaten, the captain is knocked so far. But at the other end, he is running out of partners. He is running short of the partners with 7 wickets down, and looks like a one-sided encounter with 115 to win of 11 overs. 69 मजमूई स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है, और आसमान पर सया रंग के बादल छाए हुए हैं। इसी बीच मैदान में मैच भी जारी। फाइनल मुकाबले में बल्लेबाज राशिद रसूल जो है, अब उन्हें लग रहा है कि जो कुछ करना होगा मुझे अकेले ही करना होगा, और जारहाना रुख अब इख्तियार करते हुए 25 गेंदों पर 44 रन की पारी खेली। 69 स्कोर 7 विकेटों के नुकसान पर, और अब अगली गेंद इस मतलब जहांगीर की गेंद को खेल दिया, रन के लिए दौड़ पड़े, रन मुकम्मल। सोहेल अब सामना करेंगे जहांगीर वाली की गेंद का।
सुहेल बॉलिंग मार्क पर, यह पारी का 10वां ओवर और सामना करेंगे उनकी गेंद का। सुहेल जो है सामना करेंगे यहां जहांगीर वानी की गेंद का। मजमूई स्कोर यंग स्टार रेबन का 70, 7 विकेटों के नुकसान पर। 184 रन, अभी भी 114 रन दरकार। गेंद की बैकफुट पर हल्के हाथों के साथ रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। वहां पर साथी बल्लेबाज ने। 70 मजमूई स्कोर है, 10वें ओवर का खेल जारी। बॉलिंग मार्क पर जहांगीर वानी और सामने है उनके सुहेल। सुहेल ने 2 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाया, गेंद को खेल दिया है और गेंद के पीछे फील्डर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन बनाने का मौका। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 71, 7 विकेटों के नुकसान पर। आशिक लोन हमारे साथ जुड़े हैं करालगुंड काजियाबाद से। फैसल भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस मरतबा बड़ा खूबसूरत कट, लेकिन फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे राशिद रसूल लेकिन मना किया सुहेल ने। बहत्तर मजमूई स्कोर हो चुका है। जहांगीर वानी अगली गेंद के साथ और इस मतबा बैकफुट पर खेलने की कोशिश, विकेट कीपर सफाई के साथ रोक नहीं पाए लेकिन स्लिप में फील्डर मौजूद और रन बनाने का कोई मौका नहीं। 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 72 मजमूई स्कोर, 7 विकेटों के नुकसान। 10 more overs to go and have to chase 112 runs. That's 11.20 runs per over. Is not going to be easy for a chasing side as you're already 7 wickets down, with Rashid Manzoor trying hard to get closer to the target, but it's still a long way to go. But as far as weather is concerned, not the good sign is as those clouds are just hovering and we are just witnessing a drizzle here, a slight drizzle. It has started to rain now and it might it's what we call interrupt to the game, surely, as it has started to rain here at Parraypora. In the meantime, next ball, backs away, gets beaten, and you can see a bit of venom onto the delivery as it just jumps off the surface, and the batter was completely beaten. Rashid Rasool, although he's a well set batter, but this time he can do nothing onto that as the ball was jumping off the surface. It's over number 11 in progress. Next ball, down the track he goes, and inside edge down to the scallop, no chance of a run. And it looks like NCC Green Nowpora are going to carry the day today, and it's not going to be the day for young star Reban. They conceded way too many runs in the first innings, although they had a grip over the game, they had a control over the game. But those death overs have costed them the game. In the air and just over the fielder, leaping fielder at short cover as the ball runs away down to the fence for 4, and Rashid Rasool gets to his half century in style as he raises his bat and soaks all the appreciation. That was a beautiful shot as Exeter fielder, although was inside the ring, but Rashid was beautifully executing that shot, just gets it past that fielder and down to the fence for 4. A 50, a fighting knock off the bat of skipper, leading the charge with the bat, but the rest of the bowlers have come to naught. And again, wonderfully played in the gap, beats everyone and goes to the fence for 4. Back-to-back boundaries. He moves on to 54 of 32. After 10.5 overs, it's 80 for the loss of 7. 104 to get of 55. It's nearly 10 to 12 runs per over from here on. With Muza Faizan Naiku conceding back-to-back foes. The final delivery, and Rashid goes again, hits it hard, gets it off the inside off of the bat, outside edge down to the third man boundary for 4. A hat-trick of fours to finish. 84 for the loss of 7 after 11 overs. So it has started to rain here as the rain has picked up. It's becoming quite heavy now and it might interrupt the game, and definitely going to interrupt. We'll have to wait for the signal of the umpires. I guess they are calling the players off the field, and out come the covers.
as the match has been interrupted. The rain has picked up. It's raining heavily now as we will take a short little break. If it stops, we'll be back with the live action. Until then,